go ahead. Okay. Yeah. Welcome, everyone. Good evening to everyone who is participating in this webinar. We had done this series of webinars, 4 had already gone, and this is the 5th one. And this time we thought that it is very important that when we are talking about democracy in crisis, then we also talk about issues like education, health, and other sectors, employment, and other issues also. So this time we have um, are basically concentrating on the denial of constitutional right to education. In the entire nation, there is lots of activities which are happening, but when you look at education as a sector, then you find that there are lots of problems in each state under every administration which is happening. So we have central government and the state government which are doing their own work. So in this situation, we thought that we get the experts who's either worked on this field and had have a lot of experience from the ground level, because only reading and writing or getting research work will not be. We have the first hand ground that kind of experience also be shared here. So this is why it was very important for us. So this meeting today being 5th of September, it's a Teachers' Day. It's a very important for us also to sort of talk about education and the system which is collapsing these days. And today is also a kind of a sad day for us, because when 8 years back Gauri Lankesh was shot dead in front of her house, cold-blooded murder had happened. And that was a shaker for almost all the activists across India and the world. And Gauri Lankesh had been a fine activist, journalist, and everyone knew her, and they all loved her so much. So we miss her, we remember her, and we take this Anhad's efforts to save democracy, save constitution, and being the torchbearers of these kind of democratic institutions. I invite Mridula ji to chair the session and take forward the important webinar, which is on denial of constitutional right to education. Over to you, Mridula ji. The structure would be that we'll have this session and then we will have question answers. So all of you who will have question answers can either write it in the the chat box, or raise a hand later on so that we have a direct interaction. Thank you so much. I now give the floor to Mridula ji. Mridula ji. Thank you so much, Leena. Let me begin by saying that very happy to have Bhavna and Leena, who have now taken over a heavy mantle from Shabnam, who has decided to take, I hope it's only a break, from actively running Anhad. As we know, she founded it more than 20 years ago, and it's a very vibrant organization which has contributed a lot to our civil society, taking up important issues all along these years, both in terms of discussions as well as working in the field on a number of issues, and has faced a lot of difficulty also in the last few years, which is a common experience, I think, of many people that we can see here. And we really hope that with Leena and Bhavna and the new team, they will really take the work of Anhad forward. Well, I'm very happy to and very honored to be chairing this session today, since very distinguished speakers are there. Shantha, of course, who we go back a long time, JNU in the early 70s. Almost classmates, if not batchmates.
And it's been a long journey, and Shantha is one of the most competent people who could speak on this subject with both academic and theoretical understanding as well as grassroots level experience. So we really look forward to her intervention. I'm very happy to welcome Manisha, Priyam, whom also I have known for a very long time as a younger colleague, though she insists on saying she's a student. And again, we've had long years together, many battles, many memories. And Manisha has also emerged as one of our very prominent public persona. She's a regular, has been a regular on television and in public fora, speaking on her basic subject, which was political science. But for the last many years, she's now been working very actively in the field of educational policy and programs. I will introduce everybody as we go along. And I'm happy again also to welcome Yamini Aiyar here, again, one of our most prominent personalities who's played a stellar role in the field of public policy and recently brought out a book on education, on the state of schools and what's actually been happening in Delhi. So there's a lot of grassroots level experience we have in this room. Let me just begin by saying that, like I was talking to Shantha earlier in the day, and we were saying we hope there'll be good response. She said, but it's not a fashionable subject. Education is not a fashionable subject, which is, of course, true. She's very right. It's not a fashionable subject, but that's a tragedy. It should be the most in subject because, it's at the heart of everything. And when we are talking about democracy in crisis, which is the running theme of this webinar series, I don't think that there can be anything more important to discuss than education, what's happened to it, its role. I think our early national leaders, for example, I mean, we go back to Gopal Krishna Gokhale, who was the first one who, in fact, talked about compulsory primary education, that it should be a right. And he very much linked the progress of democracy in India, the demand for democracy, for representative institutions with the spread of education. I mean, that was how it was conceived, that the idea that the two are interlinked and that democracy can really not be complete without access to education at a broad level, especially among the poor and the deprived, who are supposed to be the heart of the democratic process. So I do hope that this is not true. So I told Shantha that I don't agree that it's not that it may not be fashionable, but it continues to be a very, very important thing. And for that, what I would like to also say is that, it may not be fashionable and it may not be so in thing among the elites, but it's certainly very fashionable among the poor. If you talk to people who are actually suffering, who are at the margin, living at the margins of society, who are struggling to make a daily living, and if you talk to them, and this is something we've learned from Shantha over the years through her experience and also through studies, etc., that we've had done at JNU, that the first thing that the poor people will tell you when you talk to them is that, what do you think is your most important demand? They will not talk about increase in wages. They will not talk about getting rations. They'll talk about access to education. They understand what is their, in fact, perhaps only route to breaking out of the structure of inequality and the whole structure of the cycle of poverty in which they are stuck, that this is one way. And I think perhaps this has been one of the areas in which the inequality has also been very extreme. We had, as I said, right from the beginning, we had the vision. In the Karachi resolution also, there was a very much a commitment to the right to education. We did make a good start in the Nehru period, especially in
promoting public education. Lot of very good. The government school system expanded tremendously during that period, but after that, over the years, gradually there was a decline and a lack of belief among the elites in the necessity and the value. There was notion started spreading that perhaps you could make up for it through private education in various ways. I don't want to go into the details, but I think somewhere that notion that it was something that could not be done, it was something that needed other solution, that the simple solution of having, I mean, now we don't even hear about the demand for a common school system. But there was a point where most of our serious policy people did always talk about the necessity of a common school system. And of course, that could only be grounded if there was a functioning public education system, not what we call public schools, but genuinely, not private schools, which we call public schools, but government run, community run, municipality run schools. I recall that during the Nehru period, in the 50s, 60s, 70s, my mother was a school teacher and then a principal in an NDMC school in Delhi. And she used to have among her students children of ministers and high officials. In fact, Shabnam Hashmi studied in her school and she has wonderful memories of that school, So there was a time when this government school system functioned and people, did send their children. It is over the years that we have seen this alienation happening. So, I mean, there is so much one can talk about, but I am not the expert and we have wonderful experts. I also want to say I'm delighted this is an all-woman panel. We didn't have to struggle to say, no, there must be enough women on this panel. It selected itself. Now, what that says about the subject, I will not go into. But nevertheless, I'm delighted that this is an all-woman panel and welcome to all of you. So I'll begin with Professor Shantha Sinha. And we will have everybody speaking for about 20 odd minutes. You can little less, little more. And then we will have a discussion for about an hour or so. And so Shantha, I'll just introduce you very briefly. Shantha was professor of political science at the University of Hyderabad, from where she taught for many years and from where she finally retired. In between, she moved from that, not away from that, but kind of devoted more of her energies to founding really the child labor abolition movement in India through her foundation, which was the MV Foundation in Andhra Pradesh. And they brought lakhs of children out of labor into school. And from that, she then went on to found the commission for the National Commission for the Protection of Child Rights in 2006, which she then headed for 2 terms till 2012. And then she went back again to her teaching career at the University of Hyderabad, from where she retired. Shantha is also a Magsasay Awardee. She's a Padma Shri Awardee and many, many, many other things. But we'll stop here. Welcome, Shantha. We look forward to hearing you. Unmute yourself, please. Thank you, Mridula. And I must thank Anhad for having this discussion on education. Surely, if democracy is in crisis, I think it's so much linked to education also being in crisis. And I'm glad that the link between education and democracy has been established even while Mridula was talking just now. And also, I think I kind of repeat what Mridula said, that, when we talk about democracy, it is about really rights. And that is what has been enshrined in the Constitution of India, that democracy is about protection of rights and right to equality, right to freedom, right to social justice, whatever is enshrined in the
preamble of the Constitution. Without those principles, I do not think there can be even democracy. And education is an end in itself, but also the only way in which one can, in fact, access or gain or have the entitlement to be a good citizen and also for democracy. So I'm glad that we are discussing education in the context of democracy. I'm also saying this because right now, when you see the discussions on the issue of education, if you look at the new education policy, there is no mention of rights, just one or two places. There is no mention of democracy as well. There is no mention of citizenship. These are the core elements of what democracy is about, and nothing of this has even been referred to in the new education policy. Contrary to it, we do have the Right to Education Act enacted in 2009, and then you find that the basic core principles of equality and social justice have been, in fact, legalized. I mean, given a legal framework. Unfortunately, it has not, unfortunately, I would say, maybe by design, it has not been implemented the way the Right to Education Act should have been implemented. But then the core values, the core principles have been the principles of the constitutional principles of equality and social justice. There are, of course, one can do some kind of analysis of some compromises happening, even in the Right to Education Act. But these are aspects of contestation. And what we are looking for is where education is not a aspect of contestation at all, where there is a contestation, there's a consensus in this country among all political parties that education cannot be a matter of discussion and negotiation. It has to be there, period. I mean, they must have their share in the national resources. And how do we attain a situation where education is no more an aspect of contestation of power and, that it is there as a social norm, as a state policy? Having said this, I thought since it is such a vast field, I have just divided it into some 7 subheadings, and do some 3 minutes on each one of this. One is about, of course, the deficit in schools. I will not go into the details because I'm sure Yamini and Manisha have done huge research on the kind the schools are. But basically, how does it match with parental demand for education? As again, Professor Mridula has mentioned, that there is an enormous demand for education. One does not need any motivation or mobilization campaigns to tell parents that you have to send your child to school. In fact, imagine the present generation of parents are barely 26 to 31-year-old. They are actually products of end 20th century and 21st century. So they know what education is. We don't have to educate. And they have seen their own peers who have gone to school. They have seen what it has done to them. So in a way, that there is a parental demand for education is well established, and there is no need to further give evidence-based research to show that parents want their children to go to school. Just an oblique thing. Somehow I'm afraid of evidence-based research. I will not go into it in detail, but I think we are stuck in this randomized sampling kind of a research that we are doing, where we'll have to provide evidence for everything we say. But I'm not going to provide any evidence for anything that I say. And you can even contest me on this. One evidence that there is that parents want to send their children to school, again, through government statistics alone, is that 99% of children are enrolled in school, which means every child that is born is in school. What more evidence do we show that parents want education? If they didn't, why would they enroll their children to school? So there is substantive evidence to show that poor parents want to send their children to school because 99% of parents, Dalit, Adivasi, minority, girl children, disabled, all of them, 99%, all of them would have wanted education for their children. And I take the data.
I think the data is correct that all parents want to send their children to school. And there is another data which I'm not sure I can take it. It says that there's been a huge improvement in education. I mean, if you look at the data, they say that 93% of schools have toilets, have no water problem, they have electricity issues, and in fact, about 50% have computers, and that I'll go into again. But generally, that the school infrastructure is doing extremely well. So much so that they have even said that in the primary school, the ratio of teacher to student is 1:10. And in elementary school, it is 1:17. In secondary school, it is 1:20. That also, which actually says that there are enough school teachers, but we will have to go deeper into looking at what these statistics are. If there is only 1:10 at a primary school level, that means that the children who should have been in government schools are not there in government schools. They have all gone to private schools. If they had only calculated the total population of children and looked at the proportion of teachers in relation to the population of children, definitely there is not enough school. There is not, and school infrastructure, you and me know, you go to your neighborhood, you see if there's a toilet, you see if there is water. In fact, right now, even Mridula has just been saying, look at the floods that have come. There are so many schools which have been flooded. Children are not able to go there. And there was a statement in Rajasthan where the minister, in fact, said, how do you expect me to repair these schools? It's practically impossible. It says, Jeb se uktakar, should I give money to repair that school? There is a process. According to the process, we will go. So in a way, in one stroke, he decided that it is not the government's responsibility to make a school which is weatherproof, which can sort of sustain rain. And of course, there are examples everywhere, but in Hyderabad itself, schools, if there are 3 rooms, 1 room is occupied by a revenue office. Because that shows what kind of attitude they have to the school. In some places, the school compound is full of auto rickshaws because the slums don't have area to put their whatever new forms of vehicles have come. The schools are filled with all this. The schools are used for playing cards, for drinking, and you see, in a way, the DICE data talks about there is water, there is electricity, there are rooms, everything. You have to just go to a school if all of it actually exists. So you have, on the one hand, parents asking for schools and sending their children to school. On the other hand, there is such a mismatch between parents' hopes and aspirations and the way the schools are. I can tell you with guarantee that no parent has sent a child to school thinking the child will drop out after class 5. They are like you and me. They think that their children will at least study till 12th grade, but nothing of that sort happens. Somewhere we imagine that they're happy to just send the child to school and it is their fault that children are not attending schools. I'll go into that later. The second issue I want to talk about is the forms of exclusion. All of us know about it, but it is worth repeating the same thing again and again, just so that we are angry. Without anger, I feel sometimes you can't bring about change. If we are passive and if we are helpless and if we think there's nothing I can do about it, then those emotions don't help in change. So it's the forms of exclusion that actually gives us the strength to, say what is wrong with the schools. The recent kind of exclusion has been Aadhaar card. I'm sure those who are working in education, who are in this audience, know how much of a problem producing of Aadhaar card is for a child's entry into school. And in fact, how difficult it is to get an Aadhaar card. There is such, again, if a child's name in Aadhaar card is different from the child's name in the birth certificate, then he's finished.
he won't get admission into school. Or else the transfer certificate, the caste certificate, the income certificate. Each one of these documentation issues are factors that, in fact, pushing out children from the school. They're not even allowing them to get into the school. And parents are scolded. They're scolded, said, what, can't you get even an Aadhaar card? As if it was so simple. And in villages, in Dalit areas, in the forest area, in the tribal area, among the deserts, and not just there, even in Hyderabad city, it's so difficult to get an Aadhaar card which is perfect, where the address is perfect. How many of them can even give their address proofs? So, and telephone numbers, mobile numbers. These are the kinds of things that are actually pushing children out of school. They're not even, parents, of course, are enrolling, but they're not able to sustain them because of these terrible documentation issues. And the Right to Education Act clearly says that they can't be pushed out of school for want of documentation. But who cares that children are not coming to school and they're getting pushed out? And there are many kinds of documents that they're unable to produce. The other thing is that they think these children are dirty. Gande bache hai. I have heard it personally in my visits to schools in Bihar and in other areas. Kahan se utha kar laaye hai? For Musahar children, right in front of them, on their face. They tell the children on their face, how have you come? Who has brought you here? And of course, there have been processes of engaging with teachers, telling them you have to be a human being and then bring them in. But then how many times there are NGOs who are going to give them the processes of reconciliation and truth and things like that. So this is, imagine an 8-year-old child being told, actually being insulted and humiliated, that you're no good for the school. Go do what you want. What is that attitude? And they also say, tell the parents, you don't care. You don't give them home. You don't help them in their homework. The new education policy also, it has in its document, the parents have to be told how to help their children doing homework in the family. Do they have any clue about what kind of family, what kind of situation? In fact, that they send the children to school itself is a great favor they have done to the country and to the state. And on top of it, the education policy talks about how much time the parents don't give. If the policy itself tells that the parents don't give time, why would the teachers not scold the parents for not giving time to the children? So somewhere that insensitivity, the parents go there, they're made to stand, and they scold the parents if the child's attendance is less. Then again, the parents are told, why don't you send him regularly? But why doesn't the teacher find out why they were not able to send? There are some 1,000 reasons why poor parents and poor children sometimes can't meet some 80% attendance, as if the teachers are going to school 80%. Then, of course, there are teachers. I'll come to that later, but the teachers, right now, the problem in every school is a mobile phone and the teacher. He's so distracted by the children in the class. How will I make sure that I can get in touch with my mobile conversation? So for them, that is more important than the children in the class. Teachers are also addicted to mobile phones. So how do you correct that? And yeah, the teachers are absent. Some teachers teach, some teachers don't teach. Then children also don't complain. They don't go home and say, my teacher hasn't come. Even a 10-year-old child doesn't want to complain because they know that the parents have sacrificed so much for sending them to school that they do not want to tell the parents that the teacher hasn't come. So, these are little things that children don't complain the teachers are not teaching. Because then they know that how disappointed the parent will feel if teachers are not, if nothing is happening in school. So they maintain a kind of, they're quite discreet. I think children know how to be discreet. So in spite of all this, some children survive. It's a miracle that children are moving from one class to the next in this kind of an atmosphere. I might want to add that teachers too are vulnerable. The system has no faith in the teachers.
system thinks they have given up on teachers. In fact, when I talk about digitization, I will tell you how teachers have been totally alienated from what they are supposed to be doing. So I feel that the parents have more faith in the system than the system has in itself. And if that system is now continuing to exist, it is precisely because the parents, whoever they are, they have faith in the system. So the issue is that there is a systemic crisis. But what do all say? Would they talk about the structural inequities in the system, about how teachers treat children or how the system treats children? Do they talk about infrastructure? Do they talk about nothing happening in schools? No. They talk about children not learning as if it was children's responsibility to learn, and they come up with uh, reports after reports, data after data, that class 3 children are not learning, class 6 children are not learning, class 9 children are not learning. But they will never find out why is it they are not learning. Do we attack the child, the teacher, or do we attack the way the system is actually running? Is there enough investment in education? Are all schools equal? None of these questions are asked when they talk about learning crisis. Somewhere, I think one will have to change the discourse from learning crisis to systemic crisis. Children are not learning because the system doesn't function. Now, that has to be very, very clear, and that the system is indifferent. The system is getting away with excluding children by design repeatedly. That they are kind of uncared for. And if you look at the solution, because there is a learning crisis, what must the system do? This comes to the third thing, that instead of addressing systemic crisis, what they say, in fact, that has become a buzzword in the country, foundation, learning, and numerous, as if that was never thought of before in our country. You know, the new education policy talked about FLN. If there are here in the audience who are dealing with schools, they find that the whole country, regardless of any state, is now possessed with the word FLN, as if it's the first time that we discovered that children are not learning. In fact, if you go into the planning from the beginning, first plan onwards, they are focused only on primary education and on quality of schools. They have, if you go into the Bihar education program, it was about primary school education. If you go into the district primary education program, it is about primary schools. If it is about Sarva Shiksha Abhiyan, they talk about class 1 to class 8. But again, all the money went into primary schools. If you go into what UNICEF did in the great joyful education program, even that is about primary schools. One has always been experimenting on children and their learning only up to class 5. So I think there is a flaw in the way one is emphasizing primary education alone. You know, and I have to take another lecture for that, but believe me, that limiting children's abilities and capacities and investments only up to class 5 is somewhere sending the message poor children is enough for them up to class 5. So when teachers are provided for, they are calculated on the basis of number of children up to class 5. If they had equal number of teachers in class 8, the number of children up to class 8 will grow. If they imagine poor children can go up to class 10, there will be teachers up to class 10. You know that mathematics and science are the subjects where there are no teachers at all in the country. Subject-wise teachers are not available, and they have all gone to coaching institutions. They pay much better there. So you do not have English, mathematics, and science teachers in the country cutting across states and districts. And I think this is a peril. They have not seen it. So I would suggest that one would have to think of education for children
from preschool to class 12 and expect that children will move from one class to the other without disruption and provide for that rather than only focusing on primary school education. That mantra has failed. We are again going back to this buzzword, FLN. But it's not just FLN. I think the next point is, which I am very concerned about, is the issue of digitization of learning outcomes. This has also become a buzzword, learning outcomes. So where is the discourse about rights? Where is the discourse about equality? Where is the discourse about citizenship? Nothing. So what do? So instead of confronting the structural inequities head on, the discourse has embraced digitization as a ready-made answer to the learning crisis. If you look at the PAB reports, each state makes a claim to the central government, and central government asks them all the time the question: have you digitized? What are you doing about learning outcomes? And this has become so mechanical. You have technocrats defining what education is. They have centralized every education program at each state level. They design what children have to do in class 1, week by week, and also to design what children outcomes are week by week. And in a way, the teachers have become mindless morons, I say, where they're used as postmen to in fact pass on that information to children and then get children to do those exercises. And teachers, all they have to do is tick boxes and give this data through computers to all levels. Right now, all that the teachers are doing is that getting the formats for teaching, getting the children to do whatever what they can do, and teaching. And in that process, teachers also feel that they would be punished if the children are not learning. So they will also perhaps exaggerate that children have acquired so much of learning outcome. I mean, they can be honest. Teachers also have spoken to so many teachers. They're saying that we are not doing what we have been asked to do as teachers. And this is an alienation. They have no independence. They have no autonomy. They don't have any contact with the children the way they have to be in touch with the children. And they're forever filling forms. They're filling forms of attendance. They're filling forms of learning outcome. They're filling forms of midday meal program. How many children have come? How many children have consumed? And in some states, they will also have to give information on among the children how many are SCs, how many are Adivasis, how many are BCs, how many are this, how many girls, how many disabled. If the teacher is going to fill this up all the time, when is the teacher ever going to teach or be with the children? And we talk, that it cannot be rote learning alone. But it looks like, I don't even know what kind of learning this is. There are no games, there are no singing, there are no activities, there is nothing that is happening. And if they really didn't want rote learning, this is not the way they should have done learning, by not making teachers co-creators of knowledge. Many teachers have enjoyed being teaching before digitization. They did, in fact, engage with children. They really enjoyed being teachers. But right now, many of those teachers are so frustrated. They say, nobody trusts us. What do we do? And where is all this coming from? From the market, from those who produce this digitized software. And of course, software always won. Let me tell you that when the radios came, they found that schools must have radios. When the transistors came, they said it's not radio, let's have transistors. When the cassettes came, they said it's not this, let's have cassettes. When the computers came disk-wise, they said okay. Then something else came. So forever, these in Hindi, bakra, schools have become the ground for the market to distribute the resources, because India's population is so big. There are so many teachers, there are so many schools. They can dump all this on the children, and it just doesn't matter. Confederation of Indian Industry, school after COVID, argued for digitization. And right now, those who captured the imagination on education, the minds of
school education program, the chief ministers, anyone, you find that they're only talking about digitization. Now it is artificial intelligence, it is iPads, when there are no electricity in schools, when children are not able to come, when there is no infrastructure. This is the technology that is being done. I'm not against technology, but first you do the basic foundation. You know, even I am using technology. The other day I had to do a paper and write ChatGPT. So I'm saying I've got nothing against technology, but there has to be a basic level. No? So I can't go more. Then with this state abandonment, where do you expect parents to go? Would they send their children to public schools? They definitely go to private schools. You know, it is because the state failed. It's not that parents want their children to go to private schools. They know how much expenditure there is. All of us know. Class 1, 20,000 rupees. Annual fee. Where do they get it from? You know, but they know if you go to private schools, at least the child will survive till she finishes class 10. In a government school, after class 5, there is no school. You have to go to the next village. So, you know, this government is thinking parents want private schools. So they have decided in NEP also that privatization is one of the solutions. Certainly not. If the public schools cared for children, why would they go to private schools? Did we not go to government schools? And my education, people who are in the 70s, we all know, we were heavily subsidized. We never paid, I paid 8 rupees a month for my 12th class. I paid 30 rupees fees for my BA and MA, and in JNU 150 rupees. Now, can you imagine education at this low price? Just when the poor are ready to send their children to school, the state has abandoned them. Just when they have to be inclusive. And who in the state, I'm not going to respond to it, but I think it is a elite and short-sightedness of those who are in power and authority who do not look beyond one generation. You know, education requires long-term planning. Just as you have your bridges and everything require long-term planning. And that is just not there. I will not take more time. I wanted to talk to you about out-of-school children and especially COVID and what happened to them and how nobody cares for them. But I will not do that because I've already taken a lot of your time. But I can just tell you that none of the principles of democracy has been actually respected as far as education is concerned by the state. It is a state obligation to protect rights, not NGOs. And the state has failed miserably. There is a crisis. The crisis is not learning crisis. The crisis is systemic crisis and non-inclusion. The cost of inaction will be disastrous if we do not save millions of children through education. You will not know what it would be for themselves. How much of lack of self-esteem they would have, lack of confidence they would have. Many of them have already become drug addicts. And what would they become when there are young adults? One cannot imagine what the cost of inaction will be on children. Of course, one cannot imagine what this cost of inaction will be on democracy in India. You know, and I think the reason why we are here today is also due to cost of inaction. But right now, the discourse has changed. Right now, the discourse is about privatization, is about giving up on the poor. All along, there was cost of inaction, but the framework of democracy continued to sustain some semblance of sanity. But now, that discourse on citizenship, democracy, equality, social justice is not there. So can you believe what would happen to India's democracy and the children and our future? I'll leave it at that. Thank you so much, Shantha, and for being extremely forthright, clear, and ringing the alarm bells loud and clear in terms of warning
all of us that, what are the costs going to be of this inaction? I think that is something that's extremely important and needs to be told from the housetops, brought into public debate. I do hope that, perhaps I know you keep talking about it and writing about it, but perhaps one needs much more of a discussion and debate in the press, in the daily press, in the newspapers, where people can be made aware of what's going on. So much of the reality which you are aware of and you experience on a daily basis because you're involved with the work, it's not something that necessarily a lot of people know. I mean, those who suffer do know. But I think by and large, the extent to which the problem is there. I mean, we all see the consequences. We are all aware of people coming out of school without actually learning anything. I mean, the tragedy is that with all this talk about learning outcomes, the opposite is happening. I think that is, everybody knows that that's exactly what's going on. But thank you so much for that very, very forthright and straight, without mincing any words, account based on your wide experience. I'll now ask Professor Manisha Priyam to come in and just briefly introduce Manisha. Manisha presently teaches, just a sec. Oh, I just managed to move it. Okay, one sec. Yeah. Manisha presently is at the NIEPA, which is the National University for Educational Planning and Administration. And she earlier was teaching at Gargi College for many, many years in Delhi University. And also she is currently a visiting professor at Monash University in Australia, and is engaged in a large number of projects which involve a lot of grassroots level research in the field of educational policy and practice. Manisha. Thanks very much, ma'am. And I'd begin by conveying the greetings for Teachers' Day to Yes. very, very illustrious, I would say, a galaxy of teachers. Shanthaji's introduction was being read out by Professor Mridula Mukherjee. I remember having visited her in each one of those places, whether it's the Hyderabad University, and she used to drive down to the university, and I've seen her in her classroom there, and also at the MV Foundation office, a small office where she saw me as a researcher, and I visited her there. I have met her at the residential bridge camps, the RBCs at Shankarpalli, and of course I have seen her in her role as chairperson here at the National Commission for Protection of Child Rights. But what is unknown to the world is that I must have been one of the few who's also witnessed her work in Bihar. To those of you who are aware of my work, you know that my work is anchored on almost 2 decades of comparison of policy formulation and implementation on the ground in 2 Indian states, one to the north of the Vindhyas, the state of Bihar, and the other to the south, which is the state of Andhra Pradesh. And you can understand that one of the most important reasons I must have been doing that comparison is because as much as I was following and tracking state policies, at the young age of 23, I had started working with the ministry and the World Bank, tying up files that led to India's taking the first loan of the World Bank for education. But I had seen that level of policy. But I wanted to understand what difference ultimately it makes to children and their lives and their schools. And that's something that attracted me to Professor Shantha Sinha, even before I had met her.
in the early 90s, I had seen a fat book written by her when I was still, a field worker. I had been picked up by Arvind Narayan Das to look at the literacy movements in Bihar. And when I was doing that, that's just about the time that I had met Professor Mridula Mukherjee. She may not remember it, but she was one of those who, when I did the field work, I had to come back and tell someone as to what I'd seen in the field. And that's the time that a one-way relationship began. And that one-way relationship was that whenever I saw something in the field or I was troubled by something, there was one door in Delhi that was open to me always, and that was the door of Professor Aditya Mukherjee and Professor Mridula Mukherjee. I can't put an age to it, I can't put a number to it, but look at the quality of the interaction over the years. That every time I've had an intellectual anxiety, in the hours of darkness, in the hours of the night, these are the stellar figures I've reached out to. The third most eminent panelist here, Yamini, Aiyar. I've seen her work in Bihar, of course. I've seen her think so deeply about schools. I've also seen her work in Delhi, and I was doing my field work one more time just before the Delhi elections. I found that the poor were still clinging on to that one glimpse of freedom, that Republican freedom. Look, remember, democracies may remain, they sometimes decline. Democracy is not a gift, a benign gift of a benevolent Lord above. It's something we struggle for. But I saw the poor clutching on to that moment of Republican freedom, of democracy and development that had given them Delhi schools. And Yamini Aiyar's book is very aptly written on that. So I begin with a tribute to this very eminent panel, and especially to Shantha Sinha and Mridula Mukherjee. I have few words, but I must also admit by saying that I still don't quite understand the field that I've set out to study. And, the Monash trip also has been a journey, but we'll come back to that later. I still don't understand schools. I'm still a person trying to understand as to what policy does to children of the marginalized poor in rural areas of India. And that's back to Shantha Sinha. And of course, when I get very troubled, the go-to people are Mridula and Aditya. Now, what do I have to say today on the topic? Find that from the limited knowledge that I have of looking at schools on the ground and looking at policy from above, I have tried to see the intertwinings of democracy and development in the national arena, in the state level arenas. And I have found India to provide the most profound answers on democracy and development, and let me tell you, educational development more than anything else. And that relationship sustains me as an intellectual. Of what I have gathered, I will present to you the vignettes of how I understand the right to education. And I will then come back to talking about the current moment. So there will be two parts of what I have to say. One is the policy. Can you hear me? Can you all hear me? No, Yes, your voice keeps breaking. getting broken at times. Can you all hear me? Yes. Go ahead. No. Patani, something has happened. Some interruption is there. Okay, can you hear me now? Yes. Can you hear me now? Yes. Okay. So I'm going to present to you two aspects of how I understand things. One is understanding the right to education in India. And the second part brings us to the contemporary moment, where I try and link the democratic deficits that I see in the arena of education. So therefore, hold on to me as I delineate to you of how I understand the rights movement. Let me also begin with an ode to Nehru, the discovery of India, the famous lines which ask you to prod further कि इसके पहले क्या था, इसके पहले तो कुछ भी नहीं था. Now let me tell you that that shiny moment of the right to education is preceded by
almost 2 decades of my seeing in the earth that I traveled around in India, of an India without the right to education. So that's the India that I'm going to traverse in. That's the India that I began to see in the early 1990s. I also believe that the moments between about 2000s to 2010, that decade I consider to be a breakthrough moment, but for different reasons. Now, what did it look like as we came to the early 1990s? In the early 1990s, Ashish Bose was writing about the Bimaru states. The concept of educational underdevelopment was beginning to pounce on the Gadgil-Mukherjee formula, and almost everybody said that this planned transfer to the states is not enough. Something needs to be done to educational underdevelopment. Now, this was being said in the haloed circles of the Planning Commission. Now, we all know that universalization of elementary education was the policy norm for India. Now, let me do a little experiment and take you back. I find that at that point of time, although there was the Indian Institute of Advanced Studies in Shimla. It's being led by S.C. Dubey, the eminent B.K. Roy Burman, Suresh Chandra Shukla, many others gathered together. And there is a meeting that gets together and thinks of the fact that planning in India has been a limited exercise. Satish Sabarwal edits an entire volume based on that interaction that happens. And they say, planning has just been focused on economic growth. We have only spoken about GNPs, that the areas in India that continue to be backward are Eastern UP, Bihar, Orissa. So by the 1970s, look at the quality of our democracy. Those who were with the government, but these were all socialists. They were sitting together, critiquing the government, but the government asked them to criticize the government even further. Can you hear me? Yes. Okay. Now, these are the people. The government then asks the critics that, look, we understand that planning has these shortcomings, that is focused only on economic growth. But the robustness of the democracy was that the Ministry of Education and Social Justice asked them to formulate a cultural policy for India. And of that cultural policy, education was the most important. Now, Professor Mridula Mukherjee used the word elites many times. And let me tell you that today it's become a fashion to beat around anybody who looks like a Marxist or socialist. But the socialists of that time were saying that let us understand class along with terms that Weber gave us, along with status. And the class caste combination was used most effectively to analyze education. By the early 1970s, in India, there was an understanding that status was trumping class. Socialist development was being trumped by the fact that old elites were being reproduced through the education system. Now, they were looking at how the Soviet man was being produced. They were looking at what was happening in China. And a very important work produced by John A. Laska, which is called Planning and Educational Development in India in 1968, writes about the fact that, look, not more than half of the 11-year-olds, less than half of the 11-year-olds ever go through the entire cycle of elementary education, less than half. So that's the sad tragedy. And it was Laska who was saying that most of the upper elites are going on in secondary and higher, and the enrollment rates were higher in the upper classes. Now, Suresh Shukla repeats that, and he says, we are creating a new elite. And he said, this is a techno-bureaucratic elite. And the need for socialism in India was being discussed as the need for an Indian pathway to socialism. Then another meeting happens, P.C. Joshi, others, they get around to writing an Indian Marxism. What do they think about? They think about the fact
that how do we understand caste within this whole structure? Gandhi was being discussed. Dewey's pragmatism was being discussed. So whoever believed that there were a group of people who were close-minded and only wanted to do something called Marxism, which was foreign, I think history belittles such bigots who try to understand those who are left of center in India as being narrow-minded. Those who are left of center in India by the 1970s had said that we need to reframe India's educational development as an educational development that can think of the people who are rural and who are poor. The model of the Indian Agricultural University, the model of Gandhi, the model of Dewey needs to be thought about. The rural peasantry needs to be at the center of our thinking. So that was the openness of that era. But we did not succeed. By the early 1990s, we have Myron Weiner's famous work, Child and the State in India, wherein he begins to say, just like Laska makes a very important critique of planning in India, Myron Weiner says there are two problems here. And he says, of course, that there is a difference. Some of Indian states do very well, and some Indian states simply don't do very well. And those Indian states are bunched together in one part of India. And that's a repetition of the backward regions theory. Now, the wider work that Myron Weiner talks about is a critique of child labor. And he says, remember, caste is preventing the Indian elite from accepting that child labor needs to be abolished. He also talks about the weak state capacity. Myron's work is known to everybody here and widely known, but that's the time that somebody called Shantha Sinha enters my frame of reference. By this time, I was already working in the ministry. Now, the ministry in the early 1990s was actually not thinking of universalization of elementary education or district primary education, etc. The ministry was still funding the NFE. And I was actually sent on a program to assess NFE in Andhra Pradesh. So I saw the non-formal education centers by night, one lantern hanging, one tree, one blackboard outside. I couldn't understand. Now, everybody in Delhi would tell me this is the best policy. This is resolving educated unemployment. And see, children who have to work by day, they are getting this education by night. Something was not settling in my mind. So my masters here were telling me, great policy, resolves youth volunteerism, etc. Now, in this moment of crisis for me, where I didn't want to, follow the diktats of the bosses, the field was very different. The field reality was different. That's the time that I meet Shantha Sinha, who heard me patiently first, did not demolish me. And she told me that, have you seen child laborers in the field? I said, no. People tell me that it's good for child laborers to attend school in the evening. She said, go and see them by the day. I can't remember what project it was on, but another project took me to children in Andhra Pradesh who worked on quarry sites of granites, our wonderful bathrooms and kitchen tops, etc. I actually saw children whose eyes were constantly red, children whose back were bent. And then with the help of some friends, I met girls who were working in the cotton fields. And people in Delhi would dismiss a lot of things. That's when I went to the MV Foundation. At that point, I did not know that Shantha ma'am was associated with the MV Foundation. I actually went to meet Mr. Venkat Reddy there. And that's when I saw her sitting in the other room. That's when the connections were made. And that's when I clearly understood that child labor needed to be abolished. And it was Shantha ma'am's resolve that children needed to be in school full time. And she said, no compromise on this. Now, the policy, remember, in Delhi, and that is why I say, have your faith, but always believe in ground visions, and always believe in ground visions of what you see from the poorest children and the poorest households. There can be no vision that is a grand vision of anything being propagated by anybody else. So what I had read in Weiner's book looked like an academic argument that I would have written somewhere. But here I was learning from field experiences. Now, this kind of resolving of conundrums would lead me later in life, almost 2 decades later,
when I was doing my PhD at the London School of Economics, to adopt a framework of understanding policies and implementation, understanding policies as they open up on the field, and not understanding policies as shiny technocratic things that are formulated by economists. And Shantha Sinha's arguments were the most trenchant critique coming from a standpoint of understanding the political economy of child labor and uh, turning the pathways of policy. Now, many other things happen at that point of time, which I don't want to go into detail, but also the big policy makers within the World Bank itself, the development agencies, there is a lot of rethinking that cannot be denied. Even people like Montague Singh Ahluwalia and Singer, they get together to write the redistribution with growth papers in the UK, in Sussex, which is taken over within the bank for discussions. Then there are also the ILO that is talking of a basic human needs approach, so abolish child labor, the ILO perspectives, and these combine. And the UN then leads the EFA, of which the history is known. But we also know that there was a critical moment when India faltered on loan repayment. There was a balance of payments crisis, and India had to borrow, mortgage its gold, etc. But that was the time that the World Bank, backed by other donor agencies, insisted that India borrow to reform its primary education. Now, that's a moment, again, on which there can be differences of opinion. Remember, no policy moment is without criticism. And that's the life breath of our democracy. Remember, the planning process has its criticism. The Indian state had its criticism, which came from Myron Weiner's work and Shantha Sinha's work. But what does a democratic state do? A democratic state adopts the criticism. A democratic state responds to criticism. That is why Amartya Sen writes the famous thesis that there is less likelihood that famines will lead to death if you have a democratic state, because a democratic state above all will listen to the voices of the poor to re-anchor and reorient its policy. Now, that's what happens by the early 90s when the DPP comes. There is an ideological critique of the bank, but many on the ground believe that this is an opportunity to change the Indian school system to working for the poor, but even more, sensitize the Indian bureaucracy, the local bureaucracy, what Yamini works on, the local state capacity. That breakthrough moment for Indian education happens now when the bureaucracy in the states and the local bureaucracy gets sensitized to work with schools and to work for rural poor and children. Alongside these policy shifts that lead to the district primary education program, India also pioneered another very important change, and that happened with rights activists. And those rights activists were fighting through the Supreme Court, and that was the right to food movement. Now, what was the first step of that movement? First step was poor children are coming to school, let them get midday meals. Now, once again, Manisha, I'm interrupting you. There's a request that please speak in Hindi for some time. Okay. There are people who can't follow. Sure. तो ये थोड़ा सा बोल दीजिए आप. जी. तो ऐसा होता है कि उस वक्त जब कहा जा रहा था कि जो बच्चे, गरीब के बच्चे अब स्कूलों में आए, इनको मध्याह्न भोजन देना चाहिए, तब तक जो टेक्निकल तरीके से पॉलिसी बनाते थे, मैं उनके साथ थी, इकोनॉमिस्ट के साथ मैं उठती बैठती थी. वो कहने लगे कि देखिए, अब ये बच्चों को पढ़ाने की बजाय ये बच्चों को खाना खिलाने में टीचर्स को लगा देंगे. So at this point, I saw that there were two different responses. States to the south of India, especially Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में मिड डे मील का प्रोग्राम नहीं था, वहां राशन दिया जाता था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश बिल्कुल अपने बच्चों के लिए पूर्ण तरीके से खाना बना के खिलाने में जुट गया. महिलाएं स्कूली व्यवस्था के साथ जुटी और मेरा भोजन खास करके स्कूलों में ही होता था. मैं आंध्र के स्कूलों में ईस्ट गोदावरी में किश्तैया की एक बहुत मशहूर मिठाई है, काजा लेके जाती थी बच्चों के लिए, किश्तैया काजा. मुझे लगता था कि बच्चे मिठाई देख के खुश होंगे, लेकिन बच्चे मुझे देख के पहचानते थे और बच्चे कहते थे इसके पास खाना नहीं है. और बच्चे जो नाप के उनको मिड डे मील मिलता था उसमें से निकाल के
मेरी थाली में चावल दाल रखते थे। भूख तो चावल दाल से भरता है, किश्तैया की मिठाई की तरफ बच्चे देखते भी नहीं थे। और उस स्कूली आंदोलन का मैंने वो भी हिस्सा देखा जो मेरी किताब यदि कभी आप पढ़ें, राजूल नाम का एक मंडल, मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरत जगह इस हिंदुस्तान में मैंने देखी नहीं। और मुझे तो ये लगता है कि पूरा जीवन भी अपने इस भारत की धरती में लौटती रहूं, इसके स्कूली बच्चों को देखती रहूं, एक जीवन तो काफी नहीं है। राजूल मंडल में मैंने देखा कि बच्चे मुझे खाना दे देते थे, फिर बोलते थे भूखी है खाना दो। समझिए एक स्कूल में 300 बच्चे मुझे देख के मेरे रिसर्च को कुछ नहीं समझते थे, उनको लगता था मैं मिड डे मील खाने आई हूं। लेकिन मुझे खाना देके सब के सब बच्चे कपड़ा सुखाने वाली अलगनी जैसे होती है वैसे सुतली में बांध के किताबें टांगी होती थी, ये उनकी लाइब्रेरी थी। और एक डंडा लगा के लंच के समय में किताबें जो है वो सब जमीन पे गिर जाती थी, बच्चे खाना भी भूल करके और बच्चे किताबें पढ़ते थे। तो मनीषा प्रियम भात और सांभर खाती थी और बच्चे जो है किताब पढ़ते थे। तो इस स्कूली व्यवस्था में मुझे ये समझ आया कि हम जो ये बातें करते हैं कि राज्य पर आखिर कैसा अनुबंध होना चाहिए, राज्य से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हमने बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने बनाया। राज्य पर कैसा अनुबंध होना चाहिए, राज्य पर अनुबंध ये होना चाहिए कि राज्य एक केयर की वो नीति अपनाएगा, और नीति ही नहीं अपनाएगा, कुछ कामकाज भी करेगा। राज्य किसी तरह का प्रीस्ट या पंडित नहीं है कि वो केवल मंत्रोच्चार करके नीति का चला जाएगा। राज्य को अपने हाथ कुछ गंदगी में डुबोना है, कुछ काम करना है। और राज्य पर सर्वप्रथम कॉम्पैक्ट, amongst all rights, the right which trumps all other rights is the right for children, which got enunciated only by 2009. It is not just a right about ये enroll कर दिया, ये access कर दिया, ये राज्य पर उन बच्चों का अनुबंध है जिनकी अपनी एजेंसी भी नहीं, वो नागरिक भी नहीं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगी कि हमसे बाद लोकतंत्र हुए कुछ राज्य, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, वहां यह अधिकार हमसे पहले लिखा गया, हमने बाद में लिखा, पहले और बाद की बात नहीं है, हमने लिखा तो सही। मेरे लिए संविधान लिखने का ये दूसरा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, और इसको कई बार इतिहास को जब हमारे कमरे से गुजर गया होता है तब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इतिहासकारों के साथ जी रही थी, मिथिला मुखर्जी, आदित्य जी, मैं इतिहास बनाने वालों के साथ जी रही थी, शांता जी, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि यही इतिहास है। तो इस इतिहास का एक और पहलू था, एनएफई सेंटर्स की कहानी मैंने आपको बताई, वैसे ही मैंने शंकरपल्ली में जाकर रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेज देखे। अब मुझे ये समझाया गया कि नहीं, इनको हम पढ़ा के और वापस स्कूल भेजेंगे। बच्चे तो बड़े खुश थे आरबीसीज में, वहां से वो जाने का नाम नहीं लेते थे, पर स्कूली व्यवस्था में ब्रिजिंग एग्जाम करके उनको वापस भेजना है, इसके लिए स्कूल डिपार्टमेंट के साथ दौड़ना वगैरह वगैरह। मैं जब आती थी दिल्ली फिर मुझे समझाया जाता था पूरा टाइम ये लोग तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में घूमते रहते हैं, ट्रूली एजुकेशनल एनजीओ नहीं है वगैरह वगैरह। पर दिल्ली की ये बातें मुझे कुछ भी जो मैं एमबीएफ के काम में देखती थी कोई फिट नहीं बैठता था। और इस बार शंकरपल्ली में मैं एक बच्ची को मिलती हूँ, जो बच्ची मुझसे पूछी कौन हो तुम, मैं नोट लेती रहती थी क्लास में, बोली टीचर हूँ। तो बोली एकदम अकड़ के खड़े हो ना, तुम झुक झुक के बैठती हो यूं, तुम्हें देख के लगता नहीं है तुम कुछ अच्छा करती भी हो, कुछ बनो तुम, छोटी सी बच्ची मुझे कह रही है। फिर मैंने सोचा इतनी होनहार बच्ची मुझसे इतना अकड़ के बात करती है, ये क्या करती है। फिर मैंने बोला तुम क्या करती हो, तुम भी कुछ बनो। 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि बच्चों के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या कहानी होती है। उसने बताया कि जो 8th क्लास का ब्रिज कोर्स का या 6ठी का ब्रिज कोर्स का एग्जाम था, वो एग्जाम दे नहीं पाई। तो मैंने भी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तड़ी में कहा एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम तो दे दो। फिर कहानी ये पता चली कि उसकी माँ हैदराबाद शहर के बाहरी इलाकों में सब्जी बेचती है, सब्जी के टोकरी के नीचे उसके जमीन का पट्टा था, उसके पिता मर चुके थे, और उसके पिता के जो संबंधी थे बच्ची को पढ़ाने के लिए शंकरपल्ली भेजा था, उसके पिता के संबंधी उस दिन लाठी डंडा से उसकी माँ को मार के उसकी सब्जी की टोकरी उड़ेल के और नीचे से पट्टा ले गए थे। इसकी माँ जो कभी इसको फोन नहीं करती थी,
उसने उस रात को बताया था आज सब्जी के टोकरी के नीचे से जमीन को पट्टा भी गया और जमीन के पट्टा के चले जाने से अगले दिन वो इम्तिहान नहीं दे पाई थी। तो ये कहानियां हैं, ये कहानियां देखिए कई बार लोग जर्नलिज्म कहते हैं इसको, लेकिन ये एथनोग्राफीज हैं और हम इसको इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हमारी जो एकेडमिक व्यवस्था है वो एथनोग्राफीज ऑफ द पुअर में एनफ एम्बेडेड नहीं है। तो ये एक मुझे समझ आया कि ये ब्रिज कोर्स क्या था, तो ये एक मोमेंट है जो मुझ में जड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं आती हूँ बिहार आंध्र से, तो वहां मुझे दिखता है कि बच्चे तो स्कूल से बाहर है ज्यादा और कम अंदर है। भगवान की दया से 2005-6 में वहां एक एजुकेशन सेक्रेटरी बनते हैं श्री MM झा। वो मेरी बात सुना करते थे, मैंने उनको RBC की कहानी बताई। वो एजुकेशन सेक्रेटरी बनते पहला काम उन्होंने किया कि वो रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्स गए। तब लिंगडो साहब भी शायद शंकरपल्ली में कहीं आसपास रहते थे, बिहार काडर से अच्छा संबंध था उनका। MM झा जी ने वो देखा, बोला ये तो हमको शांता जी को कैसे भी इधर लेके आना है। Now, this is the history of Shantha ji coming to Bihar. How does she come to Bihar? She does not ask the state of Bihar for any favors. The MVF raises its own funds. How does it raise its funds? एक डच कोई डोनर था जो पोस्टेज स्टैम्प्स जब बेचता था। देखिए पोस्टेज स्टैम्प्स हिंदुस्तान में कितने के होते हैं, 1 रुपया का भी बड़ा महंगा होता है। तो 1 रुपये का अगर पोस्टेज स्टैम्प बिकता था डच मुद्रा में, उसका 10 पैसा MVF को जाता था। 10 पैसे अपने झोली में लेके शांता जी के कार्यकर्ता बिहार के जिलों में पहुंचते हैं और बिहार के जिलों में आंध्र से आने वाले लोगों को खाना पीना भी नहीं मिलता। वो साल साल भर का मसाला बांध के अपने साथ ले जाते हैं। उनका एक ही मुहिम है कि बिहार में कभी स्कूलिंग हो ही नहीं सकता अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आप ऑल्टरनेटिव में पढ़ाओगे तब। अब मैं तब तक कम से कम 15 साल से बिहार में घूमती थी सरकारी प्रोग्राम्स में। अब मुझे ऑल्टरनेटिव स्कूल सेंटर, जगजगी केंद्र, ये केंद्र देखिए मुसहर के बच्चे यहाँ जाते हैं, लड़कियां यहाँ जाती हैं, शांता जी आती हैं, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के सारे बच्चों को मान मनुहार करके और वापस स्कूल में लाया जाता है। राइट टू एजुकेशन जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, इसकी बिहार के जिलों में बच्चे इसकी रैलियां निकालते हैं, पेरेंट्स उन रैलियों में साथ जाते हैं और उनके साथ जाते हैं आंध्र के जिलों के वो कार्यकर्ता जो RT के शिक्षा के गुमनाम एक तरह से मैं कहूंगी कि वॉलंटियर्स हैं। हमें याद रखना चाहिए कि गांधी ने हमें सीख दी कि राजनीति के 2 पहलू हैं, आप प्रत्यक्ष राजनीति भी करेंगे, आप कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करेंगे। तो शांता जी भारतीय लोकतंत्र का वो हिस्सा है जो शांतिपूर्वक कंस्ट्रक्टिव वर्क करके और गुमनामी से अपना जीवन जीती हैं। लेकिन जो समझदारी मुझ में पैदा हुई कि ये में इतनी ठंड थी कि बच्चों के पास कपड़ा भी नहीं था और उनका शरीर कांपता। आप अगर अपना वीडियो म्यूट कर लेंगे तो आवाज थोड़ी ठीक रहेगी। मनीषा आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। था जो इवैल्यूएशन हमको करना था वो तब यही नीतीश कुमार जी टू बी इन अ केयर regime करना होगा, fair protected environment for the right to education to be realized. Now having के लिए मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगी। फिर से आवाज कुछ कम हुई क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, अब आप वाइंड अप कर लीजिए। मनीषा आप अगर सुन पा रही हैं तो मैं कह रही थी अब वाइंड अप कर लीजिए, समय भी काफी हो गया है और यामिनी को बोलना है और फिर जाना भी है उनको, तो बाकी चीजें हम क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे।
I guess she has been frozen. हाँ The वही screen लग रहा है. I think she can't hear us also. So I think let's just switch. हम उनको मैसेज कर देते हैं. वे उसको फोन करके बात करने की कोशिश करते हैं. उनको बता देते हैं कि और तब तक हम यामिनी का स्पीच शुरू कर लेते हैं. यामिनी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है. अच्छा ठीक है. तो मैं ब्रीफली यामिनी आई इंट्रोड्यूस यू. मैं थोड़ा हिंदी में ही बोल देती हूँ. इट सीम्स के कुछ गांव के हमें रिक्वेस्ट आए कि हम गुजरात के इस गांव से इतने लोग हैं जो कि समझ नहीं पा रहे, तो आप हिंदी में भी थोड़ी बोलने की कोशिश. तो यामिनी आप भी मुझे लगता है थोड़ा बोल पाएंगी हिंदी में. कोशिश करना थोड़ी सी अपनी थोड़ा समरी बता दीजिएगा ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि उनका आना यहाँ पे फिजूल हो गया. तो यामिनी अय्यर हमारे साथ हैं. हम उनको वेलकम करते हैं. और वो पॉलिसी एक्सपर्ट है. पॉलिसी एनालिसिस में उनका बहुत काम रहा है. और अभी वो CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की डायरेक्टर रही हैं बहुत साल. और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहां से छोड़ा है. कई उसके बारे में बहुत सारा उन्होंने वहां पे बहुत अच्छा काम किया और शायद इस यही कारण था कि उनको वो छोड़ना भी पड़ा. क्योंकि जो भी आजकल ज्यादा अच्छा काम करता है उसको फिर कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. और अभी मेरा ना वो sort of lost that link. कोई नहीं मृदुला जी, मैं अपनी बात रख लेती हूँ. ठीक है आप शुरू करिए. बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला जी. और अनहद भावना जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया. और स्पेशली इतने सॉरी, मेरा जूम कुछ अजीब सा कुछ कर रहा है. एक सेकंड. जूम में कुछ पॉपअप आ गया था, मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से और क्यों आया. मुझे यहाँ पे इस मंच पे बुलाया जहाँ मेरे से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, जिनके काम से और जिनके रिसर्च से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ. मनीषा जी की बात जब मैं सुन रही थी, एक सेकंड का मैं एक बात रखना चाहती हूँ जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, बट एक बड़ी बात है. क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं और एजुकेशन को डेमोक्रेसी के अंदर उसका जो तालमेल है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. मनीषा जी की बात जब मैं सुन रही थी और उन्होंने हमारा पूरे पॉलिसी का एक तरीके से इतिहास बताया, और उसी इतिहास में लोगों की जो भूमिका थी, जिस तरीके से शांता जी जैसे लोग, सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, आम जनता, जिन्होंने डेमोक्रेसी से एक तरीके से खुद पावर लिया, डेमोक्रेसी का पावर, और डेमोक्रेसी के माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रखी, पावर के सामने रखी, और राजनीति और राजनीतिक पॉलिसीज को बदलने की कोशिश की. ये हमारे पूरे पॉलिसी के इतिहास का एक बहुत ही जरूरी अंग है, जो आज की तारीख में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी ही पसंद नहीं है. क्योंकि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ा है. क्योंकि जब भी पॉलिसी वाले कुछ जमीनी स्तर पर करना चाहते हैं, तो लोग आके बीच में अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, अपने सिविल सोसाइटी अपनी बात रखते हैं, और उस वजह से जो इन्वेस्टमेंट हमें लगाना है, जो प्राइवेटाइजेशन हमें करना है ताकि देश आगे बढ़े, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारा जीडीपी आगे बढ़े, तो उसी वजह से हमारे सामने एक समस्या आ रही है. तो क्यों ना हम थोड़ी सी अपनी डेमोक्रेसी को कम करें और अपने बड़े बड़े हाईवेज बना दें, बड़े बड़े डैम्स बना दें, बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगा दें, ताकि हमारा देश आगे बढ़े. मगर जो मनीषा जी ने हमें बताया, पूरा जो इतिहास जो मनीषा जी ने हमारे सामने रखा, उसमें साफ पता लगता है कि प्रगति तभी होती है जब आम जनता की आवाज पावर के सामने रखा जाता है, डेमोक्रेसी के माध्यम से. जिस तरीके से शांता सिन्हा जी ने हमारे पूरे एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव डाला, क्योंकि डेमोक्रेसी थी
और डेमोक्रेसी के माध्यम से वो पॉलिसीज के सामने क्रिटिसाइज कर पाए, पॉलिसीज में जो खामियां थी वो पावर के सामने, सरकार के सामने रख पाई, और उसी से बदलाव आया। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर लोगों की आवाज दब जाती है, डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस होना चाहिए। ये बात नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल परफेक्ट थी 2014 से पहले, मगर डेमोक्रेसी में अगर एक जगह होती है जहां लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचती है, पावर तक पहुंचती है, और पावर को उस पर रिस्पॉन्ड करना बहुत बहुत जरूरी होता है। नहीं तो 5 साल बाद जब वो जनता के सामने जाती है तो जनता उसको वापस इलेक्ट नहीं करती है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। आज की तारीख में हमारी सरकार ने हमें इसे भूलने की कोशिश बहुत करवाई है। सिविल सोसाइटी नाम की चीज ही नहीं रही है। सभी सर्वाइवल के लिए जेल से बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। कुछ बात अगर आपने सामने की तो आपकी बात ईडी, आईटी, सीबीआई, एफसीआरए, बहुत सारे ऐसे उनके पास तरीके हैं लोगों की आवाज बंद करने के लिए। मगर हमें ये याद रखना चाहिए इसी कहानी से और इसी बात से कि अगर शांता जी जैसे लोगों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती तो शायद हमारे जो राजनीतिक हैं, हमारे जो पॉलिसी वाले हैं, वो ये कभी उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं रहती। और जितना प्रोग्रेस हमने अपने शिक्षा में, हमने अपने एजुकेशन में किया है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस तो किया है, बहुत चीज़ें हैं जो हमने नहीं की, मगर कुछ कुछ चीज़ें जो हमने की थी वो शायद हम कर नहीं पाते। तो इसी से मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहती हूँ जो डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। पहले मैं अपने खुद के अनुभव से जो मुझे लगता है सबसे एक बड़ी परेशानी है हमारे एजुकेशन के पॉलिसी में, उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं राजनीति के बारे में बात करना चाहती हूँ, नॉट जस्ट एजुकेशन पर, मगर जो ब्रॉडली जिस तरीके से हमने अपनी सोशल पॉलिसी का जो ढांचा बना रखा है आज की तारीख में, जहां हमने नागरिक को भूलकर एक लाभार्थी बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है उसका और हमारी शिक्षा की जो पूरी नीतियां हैं, जो बजट्स है, जो पॉलिसीज है, बहुत आसपास का एक तालमेल है। और फिर लास्ट में मैं अपने खुद के रिसर्च के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहती हूँ कक्षा और शिक्षक के बारे में। क्योंकि जैसे शांता जी ने और मनीषा जी ने हमें याद दिलाया, एजुकेशन के बारे में हम कभी बात नहीं कर सकते अगर हम कक्षा में जो बच्चा है जो सीखने के लिए आया है, और जो कक्षा में शिक्षक है जो बच्चे को सिखाने के लिए आया है, उसको हम सबसे जरूरी सामने नहीं रखेंगे। तो पहले मैं अपनी बात, शांता जी ने हमें बताया, बहुत पावरफुली बताया, कि आजकल हम काफी कहते हैं कि लर्निंग क्राइसिस है। मैं खुद मानती हूं कि आजकल कि मुझे लगता है कि हमारे पूरे शिक्षा की प्रक्रिया में एक लर्निंग क्राइसिस है। मगर जैसे शांता जी ने हमें याद दिलाया, वो लर्निंग क्राइसिस ना बच्चे की वजह से है और ना, अगर हम ध्यान से देखें, शिक्षक की वजह से है। वो एक सिस्टम की वजह से है जो ना स्कूल को, ना बच्चे को और ना शिक्षक को अपने सामने रख के नीतियां बनाता है, वो कुछ और सोच के नीति। यामिनी आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गई हैं यामिनी, आपको ओ माफ अनम्यूट कीजिएगा, करिए। सॉरी, पता नहीं ये कैसे, कब हुआ और कैसे हुआ, किस पॉइंट पे म्यूट हो गई, बट अभी मैं, अभी 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 हुआ, अभी ओके अभी ओके हुआ। ग्रेट। तो सबसे पहले मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ आपको। ये बात करीब 2010 या 11 की बात है, जब शिक्षा का जो अधिकार था 2010 में लागू हो गया था। और उस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक बहुत मूल्य चीज थी कि हर स्कूल में एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पीटीएम, होगा। और उस पेरेंट टीचर एसोसिएशन की सबसे जो जरूरी भूमिका रहेगी वो स्कूल से जवाबदेही मांगना। आखिरकार पर अगर कम्युनिटी को, माँ बाप को स्कूल के साथ ये लिंक नहीं है, अगर स्कूल माँ बाप तक जवाबदेही नहीं देगा
तो फिर स्कूल किस लिए? तो ये एक बहुत अच्छी नीति बनाई गई थी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। और मैं कुछ साथियों के साथ मध्य प्रदेश के कुछ गांव में काम कर रही थी, क्योंकि हमें, जैसे मनीषा जी ने भी कहा था, दिल्ली में बैठ के बहुत बहुत सुनने को मिलता है कि गांव के लेवल पर अवेयरनेस नहीं है। ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये एक जगह बनाई गई है जहां नागरिक अपने हक के लिए, अपने अपने शिक्षा के अधिकार के लिए माँ बाप स्कूल के साथ अपना अधिकार मांग सकते हैं, मगर उनको इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है। तो हमें जाकर मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उस मोबिलाइजेशन के चक्कर में गांव तक पहुंचे, और गांव में जब गए तो ऑफ कोर्स हमें ये पता लगा, जो सबको मालूम है जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, कि गांव के लेवल पर हर माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए के बारे में उतना ही सोचता है जितना कोई शहरी माँ बाप। और वो बहुत चाहते हैं कि स्कूल के साथ उनका तालमेल अच्छा रहे, और कि उनकी भी भूमिका रहे कि स्कूल के अंदर रोज की नीतियां, टीचर आता है किस तरीके से पढ़ाता है, वहां की पूरी व्यवस्था अच्छी है या नहीं, वो भी चाहता है कि उनके बच्चे एक अच्छी स्कूल में अच्छी पढ़ाई करें। तो मोबिलाइजेशन का काम हमारा ज्यादा नहीं था, मगर हमारे काम में दो पहले दिन से ही सिस्टम के साथ बहुत रुकावट आ गई। क्यों? क्योंकि एक गांव में माँ बाप की जो कमेटी बनी थी मीटिंग के लिए, तो सब आए और उन्होंने हमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि सूचना के अधिकार में लिखा गया है कि हमारा अधिकार है कि हम अपने स्कूल के लिए एक प्लान बनाएंगे, तो क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि सरकार ने हमारे स्कूल के बजट के लिए कितना पैसा रखा है ताकि हम प्लान बनाएं? आखिरकार में अगर हम घर में हर महीने अपनी प्लानिंग बनाते हैं, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, स्कूल की फीस में कितना देंगे, फिर बचत क्या होगी कि हम एक बारी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, हमारे सामने एक बजट तो रहता है। हमने जब माँ बाप ने हमें हमारे सामने ये सवाल रखा, तो हमें एकदम से पता लगा कि जितनी भी आप बाहर से कुछ बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आते हो, सच्चाई कुछ और होती है, और सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल हुआ एक इस छोटे से और सबसे जरूरी सवाल का उत्तर निकालने में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बजट बनाती है, वो बजट बनाती है एक्सेल शीट पे, मीटिंग में, सरकारी मीटिंगों में दिखाने के लिए कि कितना बजट, कितना आवंटन किया, कितना खर्चा हुआ। कभी ये नहीं सोचती कि गांव के लेवल पर किसको क्या जरूरी सूचना चाहिए और किस तरीके से उस सूचना को देनी चाहिए। तो कोई तरीका नहीं था आसान जिससे पता लगा कि वो 20,000 का जो भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान का जो बड़ा बड़ा बजट है, उसमें से कितना पैसा स्कूल के अकाउंट में पहुंचता है, और ऐसे तरीके से स्कूल में के अकाउंट में पहुंचे जहां स्कूल में जो शिक्षक है, हेडमास्टर है, माँ बाप है, जो पीटीएम जो बनाया है, उसके उस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खर्च अपने जरूरतों के हिसाब से करे। हमें बहुत समय लगा इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए, मगर क्योंकि हम लोग गांव में गए थे और गांव में माँ बाप से बात हुई थी, तो बहुत प्रेशर लगा कि वापस नहीं जाएंगे जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर मिला, और पता लगा कि इन 20,000 करोड़ पैसों में से केवल करीबन 15,000 के आसपास, ये मैं मोटा मोटा बता रही हूं, पैसा ऐसा पहुंचता है स्कूल के अकाउंट में जहां स्कूल को उस पैसा को अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करने का हक है। क्योंकि बाकी जो पैसे होते हैं वो दिल्ली में या फिर भोपाल में या फिर पटना में जो सरकारी अफसर हैं और जो राजनीतिक हैं, उनको लगता है कि वो बेस्ट जानते हैं, तो वो उन सबको बांध देते हैं कि आप ये पैसा केवल इन चीजों पे खर्च करोगे, और स्कूल बेचारा बैठा रहता है, उनकी जरूरतें शायद कुछ और होती हैं, मगर वो उन पैसों का खर्च नहीं कर पाते। फिर जब हम गए वापस गांव में, थोड़ा हमें भी बुरा लगा कि माँ बाप इतना समय हमें दे रहे हैं और हम केवल उनको बोल रहे हैं कि 15,000 रुपए का एक प्लान बनाना है। खैर, माँ बाप बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें अपना हक चाहिए था, तो उन्होंने कहा चलिए जो भी है, करोड़ों में से 15,000 तो मिला है ना, तो हम क्यों ना इन 15,000 को अपने स्कूल में अपनी स्कूल की जरूरत के हिसाब से खर्चा करें। उनका प्लान क्या था? स्कूल में छत की मरम्मत करवानी थी, क्योंकि बारिश के महीने में जब और कुछ काम नहीं होता, शादी का सीजन भी खत्म हो गया, खेती बाड़ी का काम भी खत्म हो गया, सारे बच्चे तैयार होते हैं स्कूल में रोज आने के लिए, अटेंडेंस की उस समय समस्या नहीं आती है।
तो हम क्यों ना छत की मरम्मत कर दें, क्योंकि बारिश के मौसम में उसी कक्षा में इतना पानी आ जाता है कि शिक्षक को एक मौका मिल जाता है कि अब हम गांव में नहीं आएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ना बच्चे पहुंचेंगे ना शिक्षक पहुंचेगा, बस गया काम। तो उन्होंने कहा 15,000 रुपए में हम अपनी छत की मरम्मत खुद करेंगे, मगर क्योंकि इतना पैसा नहीं है, हम अपनी दिहाड़ी खुद की अपनी निकाल देंगे, फ्री में अपना काम करेंगे, लेबर अपना, मटेरियल का पैसा सरकार से। चलिए जी, ये प्लान बनाया, अप्रैल में स्कूल शुरू हुआ, अप्रैल आया, फिर और फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल में शुरू होता है। अप्रैल आया, मई आया, जून आया, बारिश आई, जुलाई आया, बारिश और तेज से आई, अगस्त आया, बारिश और भी ज्यादा तेज से आई, सितंबर आया, बारिश खत्म, स्कूल गया, अकाउंट में एक कौड़ी पैसा नहीं पहुंचा। और वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कहीं बहुत दूर पैसा था, और जो बहुत दूर दूर से डिजिटल इकोसिस्टम में एक माउस से एक क्लिक लगाएंगे ताकि पैसा नीचे आएगा, उसको क्या परवाह, स्कूल तो इतनी दूर है, और स्कूल में स्कूल वाला कोई सवाल नहीं पूछ पाता, क्योंकि स्कूल को क्या पता कि कोई भोपाल में बैठा हुआ वो अब हमारे अकाउंट को देख रहा है। तो गया काम से, स्कूल में जो काम होना था जिससे शिक्षक और बच्चे कक्षा में बैठे कुछ सीख पाते, वो भी गया, और माँ बाप की का जो हक था वो तो गया बिल्कुल पानी में। मैं ये बात इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि हमने अपने पूरी नीतियों में, जब स्कूल और लोग नीति बनाने के समय में नीति वाले बनाने वाले लोगों से, जो पॉलिसी मेकर से इतना दूर बैठा होता है, हम पॉलिसीज ऐसे बनाते हैं कि स्कूल के बारे में और स्कूल की जरूरतों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि माँ बाप को पेरेंटल अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस की क्या बात, जब आपकी पूरी जो सिस्टम है वो इतनी केंद्रीकरण है, इतनी सेंट्रलाइज्ड हो गई है कि आप गांव के स्तर पर गांव के जरूरतों से खर्चा कभी करने का मौका ही नहीं देते। और जब ये बात सरकार के सामने डाली जाती है तो सरकार कहता है ग्राउंड लेवल पर बहुत करप्शन है, इसलिए हम स्कूल को बताते हैं कि ये 5 रुपए जो आपके हैं वो वो टाटपट्टी के लिए खरीदेंगे, 10 रुपए जो हमने आपको दिए हैं वो ब्लैक बोर्ड के लिए खरीदेंगे। हम ये कभी सोचते नहीं है कि स्कूल को शायद अपनी जरूरतों को के बारे में हमसे ज्यादा मालूम है। तो जब तक हम अपने सिस्टम में ये केंद्रीकरण की जो कोशिश है उसको तोड़ नहीं पाएंगे और विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएंगे, तब तक ये पूरा जो एक तरीके से कनंड्रम है, विशिष्ट साइकिल जो शांता जी ने हमारे सामने रखा कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना कक्षा में ना शिक्षक में, मगर जिस तरीके से सिस्टम बनाया है उसमें प्रॉब्लम है, उसको हमें तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो एक सोच है जो हमारे पूरे पूरे पॉलिसी और सोसाइटी के अंदर बैठ गई है कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत होता है और जमीनी स्तर पर अवेयरनेस नहीं है, उसे हमें तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बाप को हमसे ज्यादा पता है कि उसके बच्चे को किस तरीके की शिक्षा की जरूरत है। इसी बात को अगर मैं आगे खींचूं तो ये जो सोच है कि जमीनी स्तर पर इतना भ्रष्टाचार होता है, और कुछ जो राजीव गांधी ने बहुत साल पहले 1980s में जब वो प्रधानमंत्री थे कहा था कि 1 रुपया का 80 पैसा सिस्टम के अंदर खर्च होता है और केवल 10 पैसा गांव के स्तर पर पहुंचता है। इसी सोच के माध्यम को लेके हमने अपनी पूरी पॉलिसियों में ये सोचा है कि अगर आप पूरे सिस्टम को उस कार्यक्रमों से हटा दें, मतलब पंचायत को सिस्टम से हटा दें, ब्लॉक के लेवल के अफसर को सिस्टम से हटा दें, और अगर पॉसिबल है तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल को ऑफिसर को भी सिस्टम से हटा दें, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। सिस्टम में इन्वेस्ट ना करें, कहता है जिस तरीके की पॉलिसी की सोच अब बैठ गई है, क्योंकि सिस्टम में इतना करप्शन है, सिस्टम में इन्वेस्ट ना करके हम क्यों ना डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हमें ये करना, टेक्नोलॉजी ने हमें औजार दे दिए हैं जिसके माध्यम से ये हो सकता है।
इसीलिए डीबीटी, जहां डीबीटी नहीं लगा सकते वहां स्कूल के अंदर क्यों नहीं एक बायोमेट्रिक लगा दें या एक कैमरा लगा दें कि कोई गुजरात में मुझे पता लगा कि सर्व शिक्षा अभियान के पूरे ढांचे में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो अहमदाबाद में बैठ के जो हमारे सेक्रेटरीज और आईएएस के जो सेक्रेटरीज हैं वो देख पाए कि स्कूल में क्या टीचर पहुंचा या नहीं पहुंचा। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी हमें दो चीजें देती हैं, एक तो पूरे सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डालना, और दूसरा जब जब सिस्टम को हम तोड़ नहीं सकते तो सिस्टम को देखें ऊपर से, ताकि ताकि पूरे सिस्टम में और भी ज्यादा केंद्रीकरण डाल दें। हम स्टेट कैपिटल में बैठ के देखें कि स्कूल में क्या हो रहा है, और उसकी वजह से हम केवल वो चीजें देख सकते हैं जो कैमरा दिखाता है। मतलब कि हम केवल ये देख सकते हैं कि क्या टीचर पहुंचा कि नहीं, हम ये नहीं देख पाएंगे कि क्या टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं, कि क्या टीचर बच्चों की जरूरतों के हिसाब से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो बिल्कुल ये जो टेक्नोलॉजी में शांता जी ने हमारे डिजिटाइजेशन और एजुकेशन के बारे में बहुत बताया, मैं उस पे एक और लेयर डालना चाहती हूँ। अगर हम डिजिटाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचें तो ये जो सिस्टम में बात फैल गई थी कि जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, जमीनी स्तर पर अवेयरनेस नहीं है, उसको तोड़ने के लिए क्यों ना हम पूरे सरकारी ढांचा को तोड़ दें और डायरेक्टली पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचा दें, और जहां वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल तो चला रहा है तो कमांड एंड कंट्रोल के माध्यम से स्कूल पे और ज्यादा डंडा लगाए, स्कूल को पावर ना दें। और इसमें एक दूसरी समस्या आती है कि उसी के अंदर फिर हम आम नागरिक को एक हकदायी नहीं कहते, नागरिक को हमने लाभार्थी बना दिया कि लाभार्थी है जिसके अकाउंट में हम पैसा डाल सकते हैं। ये कभी, और जो शब्द जब अब आज की तारीख में हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाभार्थी, कोई भी नागरिक जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है वो एक लाभार्थी नहीं है। वो पैसा पहुंचता है उनके अकाउंट में इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो उनका हक है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि सोशो इकोनॉमिक राइट्स हर नागरिक को डेमोक्रेसी में दिया जाना चाहिए, और उन्हीं राइट्स को हमने पिछले 2000 की जो पूरा दौरान था जहां हमने एक राइट्स बेस्ड वेलफेयर सिस्टम बनाया और कानून बनाए थे, उन कानूनों के माध्यम से हमने लोगों को हक दिया। नागरिक एक हकदाई है, एक लाभार्थी नहीं। मगर ये जो लाभार्थी की सोच हमारे पूरे पॉलिसियों में, नीतियों में अब बैठ गई है, उसी लाभार्थी की सोच से हम और भी ज्यादा कंफर्म करते हैं अपने पॉलिसीज में कि हम जमीनी स्तर पर एम्पावरमेंट, जमीनी स्तर को सशक्त नहीं करना चाहते हैं। जो भी अगर सरकार को नीतियां इम्प्लीमेंट करने हैं वो ऊपर की तरफ से, ऊपर की सोच से होंगे। तो जब तक हम इस चीज को बदलेंगे नहीं, जब तक हमारा सिस्टम इस चीज को बदलेगा नहीं ताकि वो जमीनी स्तर को सक्षम बनाए और पॉलिसियां जमीनी स्तर की जरूरतों को ध्यान में रखे हुए नहीं बनेंगी, तो हमारा जो शिक्षा का हक है वो कभी कायम नहीं हो पाएगा। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ कक्षा और शिक्षक के बारे में। मैंने बहुत समय कक्षाओं में और शिक्षकों के साथ बातचीत करके कक्षाओं की सच्चाई को समझने की कोशिश की है। मेरे खुद के बच्चे सीबीएसई के स्कूल में बैठे हैं और वो रोज वापस आते हैं और कहते हैं कि टीचर ने कहा बहुत सारा होमवर्क करना है क्योंकि सिलेबस इतना है, करिकुलम इतना है और एग्जाम आ रहा है। ये एक सच्चाई है कि हमने जिस तरीके से हम अपनी शिक्षा का जो ढांचा बना रखा है, चाहे वो प्राइमरी के लेवल पर हो, चाहे वो मिडिल स्कूल के लेवल पर हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल के लेवल का हो, जिस तरीके से हमने उसका ढांचा बनाया है वो ढांचा एक तरीके से सिलेबस को पूरा करने, सिलेबस, टेक्स्ट बुक और करिकुलम, इन तीन चीजों के पीछे भागता रहता है, और इतना तेज भागता है कि वो कभी ये नहीं सोचता है कि क्या बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं। मैं दिल्ली के स्कूलों में मैंने बहुत समय बताया टीचरों के साथ, और बार बार टीचर मुझे यही कहते थे कि
कभी कभी हमें लगता है कि क्लासरूम में जब हम जाते हैं तो हम और क्योंकि एग्जाम का इतना प्रेशर आता है कि हम बच्चों को बोलते हैं अरे समझना छोड़ो, झट से रट्टा कर लो ताकि एग्जाम आप पास कर लो। और टीचर के मन में ये बात इसलिए बैठी है, नहीं क्योंकि सिस्टम टीचर से एक ही सवाल पूछता है, आपके स्कूल में आपके क्लास में पास परसेंटेज कितना हुआ। अगर आपने पढ़ाई ठीक से की है तो आप जरा दिखाइए, लेसन प्लान में हम केवल ये देखते हैं कि क्या सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ये कभी नहीं पूछताछ होती है टीचर के साथ कि क्या आपने आप जब क्लासरूम में जाते हैं, जब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिलेबस में जो है और किताबों में जो लिखा हुआ है वो बच्चों के लेवल के हिसाब से है? क्या हमें वहां में कुछ बदलाव लगाना चाहिए? अगर हमें ये पूरी रट्टाफिकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसे तोड़ना है, तो टीचर से कभी पूछा गया है कि उसे तोड़ने के लिए टीचर के खुद के अनुभव क्या है और उसे किस तरीके से तोड़ना चाहिए? ये सवाल कभी पूछा नहीं जाता। और उससे उल्टा टीचर पे बहुत प्रेशर लगाया जाता है कि वो पास परसेंटेजेस को जितने हद तक पूरा कर पाए उतने हद तक वो फोकस करे। तो टीचर ऑटोमेटिकली क्लासरूम के पहली 3 रो पर फोकस करती हैं और पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है उस पर फोकस उनका कम हो जाता है। और इसमें एक और समस्या आती है, क्योंकि टीचर से बार बार यही सवाल पूछा जाता है और उसके ऊपर जो शांता जी और मनीषा जी ने हमें कहा कि टीचर को बेसिकली एक फॉर्म भरने वाला काम दिया जाता है, उन दोनों चीजों को लेकर टीचर के भी मानसिकता बदल जाती है। टीचर खुद कहते हैं कि हम आए थे यहाँ पे पढ़ाने के लिए, मगर हमें बस क्लर्क बना दिया गया है। और जब हमारे पढ़ाने के बारे में पूछा जाता है तो केवल एक सवाल आता है कि आपके स्कूल के और आपके क्लास में पास परसेंटेज कितने हैं। और मैं इतना भी और एक और इसमें मैं बात रखना चाहती हूँ जिस पे हमें ज्यादा गहराई से सोचना चाहिए। ये केवल एक सिस्टेमिक समस्या नहीं है, एक लेवल पर ये एक सामाजिक समस्या भी है कि हम अपने समाज में भी शिक्षा को केवल एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटली देखते हैं, किस तरीके से कितने एग्जाम हमने पास किए और फिर उससे आगे डिग्री कहाँ हमें मिल सकती है। और उसी उसी हमें अंग्रेजी में एक शब्द है रैट रेस, उसी चक्कर में हम घूमते रहते हैं। कभी रुक के ये नहीं पूछते कि क्या बच्चा क्लासरूम में सही तरीके से सीख रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो पीछे बैठ जाता है क्लासरूम में पहली कक्षा ऑनवर्ड से, वो बेचारा बच्चा पीछे ही रहता है और उसे आगे बढ़ाने में किसी का फोकस नहीं रहता। और उसका एक लास्ट जो टीचर की मानसिकता पे जो बदलाव जो आता है उसके एक लास्ट चीज मैं कहना चाहती हूँ। जब भी मैं टीचरों से बात करती हूँ, खास करके सरकारी स्कूलों में, और मैं ज्यादातर केवल सरकारी स्कूलों में अपना रिसर्च करती हूँ, प्राइवेट स्कूल में मुझे केवल अनुभव है क्योंकि मेरे बच्चे उन स्कूलों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं अपने रिसर्च के माध्यम से बात छेड़ना चाहती हूँ। टीचर के साथ जब कक्षा और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होती है तो टीचर पढ़ाने के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं और वो खुद बताते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। मगर जब हम टीचरों से पूछते हैं कि ये सब आप क्यों नहीं कर पाते, तो टीचर भी अपने मन में बहुत सारे एक्सक्यूज लेके बैठ जाते हैं। टीचर कहते हैं कि सिस्टम हमें ये काम करने के लिए मौका नहीं देता। टीचर कहता है कि सिस्टम में जो है वो नई नई चीजें हर रोज बताते हैं, तो फिर हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ाने के लिए हमें समय नहीं मिलता। और अगर और कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं मिलता टीचर को, तो टीचर ये भी कहता है कभी कभी कि देखो मैडम, आप तो दिल्ली से आप तो कहीं और से आई हैं, आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो आपको क्या पता कि किस गरीबी में बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उनको तो स्कूल के बारे में और शिक्षा के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस भेजते हैं। तो फिर हम बेचारे टीचर कैसे पढ़ा सके? एक लेवल पर हमारे सिस्टम ने टीचर की ओनरशिप भी टीचर से हटा दी है। और मैं ये बात इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि हमें टीचर को ब्लेम करना चाहिए, मैं बस ये टीचर की सच्चाई आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम और कुछ हद तक समाज ने भी टीचर से टीचिंग की जो मेन जो पर्पस होता है, टीचर का जो टीचिंग की पढ़ाई लिखाई की जो खुशी मिलती है टीचर को, उसी को हमने इतनी तेजी से हटा दिया सिस्टम से कि टीचर बेचारा भी सिर्फ एक्सक्यूजेस में बैठा रहता है और बार बार कहता है कि हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सिस्टम हमें पढ़ाने नहीं देता।
कभी खुद नहीं सोचता कि क्या उसमें हमारी भी कहीं पे कोई कमी है। तो अगर हमें शिक्षा के अधिकार को सच में डेमोक्रेटिकली अपने देश में लगाना लागू करना है, और एक तरीके से उसका जो सही तरीके से अगर उसको हमें जोर देना है, तो तीन चीजों पर हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। एक तो नागरिक को हमें लाभार्थी नहीं बनाना चाहिए और बच्चे को हमें लाभार्थी नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, हमें ये हमें हमें इस गलत फहमी में नहीं नीतियां जट जाना चाहिए कि स्कूल और माँ बाप को अपनी जरूरतों के बारे में कम पता है। दिल्ली में बैठे हुए या स्टेट कैपिटल पटना में बैठे हुए या अहमदाबाद में बैठे हुए लोगों को ज्यादा पता है। हमें गांव के लेवल पर स्कूल के मोहल्ले के लेवल पर स्कूल के लेवल पर स्कूल को सक्षम करना चाहिए। विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है और स्कूल की जरूरतों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि स्कूल के माँ बाप स्कूल की छत की मरम्मत करने के लिए तैयार हो गए, जो एक तरीके से सरकारी ड्यूटी है, वो खुद तैयार हो गए, मगर सरकार ने ये नहीं सोचा कि स्कूल तक पैसा सही समय में पहुंचना चाहिए। और लास्ट, हमें अपने टीचरों के साथ और अपने पूरे समाज में एक बहुत ही गहरी तरीके से बातचीत शुरू करनी चाहिए, एक तरीके से एक वार्तालाप शुरू करनी चाहिए कि हमने क्या अपने पूरे शिक्षा का जो ढांचा है उसे रिड्यूस कर लिया है इनटू एन एग्जाम सिस्टम, कि जब तक बच्चा एग्जाम पास ना कर पाए तब तक हमें लगता है कि शिक्षा सही तरीके से ठीक तरीके से हो नहीं पाई। मेरे बच्चे भी आजकल एग्जाम की तैयारी में बैठे हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इन्हीं बातों को बोलती हूं मगर खुद नहीं अपनाती, क्योंकि मैंने अभी इस कॉल पे बैठने से पहले अपनी बेटी को कहा, तुम्हारे एग्जाम 4 दिन में शुरू होने वाले हैं, बैठ के कमरा बंद करो और रटना शुरू करो। अगर मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे तो फिर डांट आपको मेरे से जरूर पड़ेगी। तो हम भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। और मैं ये नहीं कहती कि शिक्षा में एग्जाम जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, मगर हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि एग्जाम शिक्षा नहीं है, वो केवल उसका एक ढांचा है। हमें शिक्षा के बारे में एक दूसरा सामाजिक सवाल पूछना चाहिए और एक दूसरी तरीके से उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हम चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाए, कभी पूरे नहीं होंगे। आज की तारीख में भी एनसीईआरटी की करिकुलम में किताबों में फर्स्ट पेज में प्रियम्बल अभी भी है। शुगर करो, छोटी छोटी चीजों के लिए हमें खुश रहना चाहिए, मगर उस प्रियम्बल का कोई मतलब नहीं होगा अगर हम अपनी शिक्षा में बच्चे को सिर्फ तोता बनाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने वाले तोते नहीं बनाते, केवल तोते बनाते हैं। उस पर हमें ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच यामिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा का पूरा आपने हिंदी में बताया और इतना बढ़िया आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरी समझ और कहाँ से आपने एग्जाम्पल्स देके बताया, अलग अलग जगह जहाँ आप गई हैं, अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स भी आपने दिए। मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है, सुनने वाले हैं, उनको आपकी बात बहुत समझ आई होगी और पसंद आई होगी। और आपने जो जो ये कहा विकेंद्रीकरण, आपने वर्ड यूज किया, बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी कि विकेंद्रीकरण तो एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन ही है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगर स्कूल में पेरेंट्स को और स्कूल को इतने भी हक नहीं है कि वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो हाथ फैलाने पड़ते हैं और मिलता भी नहीं है, तो फिर ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ वोट देना, सरकार, वोट से सरकार बनाना और ये सब तो नहीं है। डेमोक्रेसी का तो मतलब है हमारे जीने के, हमारे फंक्शनिंग के हर एक एस्पेक्ट में प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ये है कि जो लोग जिनके ऊपर असर पड़ रहा है उन्हीं को हक है अपने फैसले लेने का। तो असली प्रिंसिपल तो डेमोक्रेसी का यही है कि जो जनता है, चाहे वो स्कूल के टीचर हो या वो पेरेंट्स हो, जहां भी हम काम कर रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मतलब है कि हमको एज टीचर्स हमें हक होना चाहिए अपने कोर्स बनाएं, हमें हक होना चाहिए हम अपनी इवैल्यूएशन करें,
हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो डेमोक्रेटिक राइट कैसे बनेगा अगर हमारे पास मिनिमम, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि किसी को पता ही नहीं है कि एक स्कूल के हक क्या है, बजट का कोई नोशन ही नहीं है कि स्कूल का भी एक बजट होगा। स्कूल्स के लिए बजट होगा जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपर्ट से पूछ लेंगे। और ये जो बिल्कुल आपने कहा कि ये नोशन के करप्शन जो है वो सारा ग्राउंड लेवल पे है, ऊपर तो सिस्टम बहुत अच्छा है इसलिए नीचे फ्रीडम नहीं देनी चाहिए उनको खर्चा करने, क्योंकि वो खा जाएंगे। और जो बड़े बड़े करोड़ों हाँ यार, तो पूरा पानी भर गया साला, साफ कराने के लिए रुपए, उनको बोला था, साफ भी नहीं करा रहे हैं, ये तो अभी खोल हाँ, दिया हमें। ये बीच में कुछ किसी की आवाज आई है, देखना भावना, जरा म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने कर दिया म्यूट। ओके, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच यामिनी। अब मुझे नहीं मालूम आप कितनी देर रुक पाएंगी, लोग कुछ सवाल वगैरह भी मुझे लगता है जरूर पूछना चाहेंगे। और ये शुरू करने के पहले एक सिर्फ चीज मैं ऐड करना चाह रही थी यहाँ पे। अभी हाल ही में हमने यूपी के बारे में जो पढ़ा कि वहां पे स्कूल्स को, बहुत सारे स्कूल्स को सो कॉल्ड मर्ज कर दिया है। मर्ज का मतलब है कि एक्चुअली आपने छोटे स्कूल अबॉलिश कर दिए, ये कह के कि इस स्कूल को हम बड़े स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। तो हुआ क्या है, कोई कितने हजारों स्कूल वहां पे पिछले 1 महीने के अंदर ये खबर आई कि मर्ज कर दिए गए हैं। देखो ये जो ट्रेंड है, ये एक तरह से बैकडोर से प्राइवेटाइजेशन भी है, क्योंकि कई बारी फिर वो जो स्कूल प्रेमिसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाता है या किसी और काम में लाया जाता है। एक रियल एस्टेट का भी काफी इशू यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। और सरकार जो है यूपी की, उसको जब क्रिटिसिज्म हुआ कि आप ये मर्ज कर रहे हो, इसका मतलब है बच्चा जो गांव में है उसको दूर जाना पड़ेगा स्कूल अटेंड करने के लिए। मर्ज का तो यही मतलब है ना कि छोटी जगह के स्कूल बड़ी जगह में मर्ज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम हजारों प्ले स्कूल खोल रहे हैं गांव में, इतने हजार प्ले स्कूल। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये स्कूल्स को, प्राइमरी स्कूल्स को, छोटे स्कूल्स को अबॉलिश करके आप क्या प्ले स्कूल बनाएंगे, वहां पे क्या होगा, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि ये भी एक बड़ा, ये रैशनलाइजेशन के नाम पे बहुत कुछ होता है जो असल में उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये अगर छोटा स्कूल है इसमें कम बच्चे हैं। और देखिए जो आपने कहा ना, शांता ने मेरे ख्याल कहा कि एवरेज जो बता रहे हैं कि पर कैपिटा जो टीचर है, बहुत अच्छा टीचर स्टूडेंट रेशियो है, इसका मतलब ये है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने की बजाय, अगर बच्चे, हो सकता है सच में बच्चे गांव के स्कूल में नहीं जा रहे हैं और स्कूल की अगर 100 की कैपेसिटी है तो वह सिर्फ 20 बच्चे आ रहे हैं, तो बजाय उसको रेक्टिफाई करने के, उसको इम्प्रूव करने के, जैसे कम से कम हमने जो पढ़ा, कम से कम कितना हुआ वो यामिनी और आप लोग ज्यादा जानेंगे, पर दिल्ली में कम से कम पिछले कुछ सालों में ये एफर्ट तो हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव किया जाए और उसका असर भी पड़ा। हमको सबको अपने एक्सपीरियंस से भी पता है कि हमारे इलाकों में जो गरीब लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने बच्चे वापस गवर्नमेंट स्कूलों में भेजने शुरू कर दिए जब उन्होंने देखा कि वहां पे पढ़ाई इंप्रूव हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। और ये करने की बजाय हम रैशनलाइजेशन के नाम पे हम स्कूल ही अबॉलिश कर दे रहे हैं। ये भी हम लोगों को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, बोलना, समझना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने इस वक्त ये हो रहा है। उसमें प्राइवेटाइजेशन नाम नहीं कोई लेता है। तो ये चीज मैं जरा आपके किटी में डालना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि जो लोग अपने सवाल पूछे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, वो भी हमें बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है अपने अपने स्टेट में, अपने अपने लेवल पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। भावना, आप सवाल देख रही है? आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट। हाँ, साथ ही अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जो भी सवाल पूछना चाहते हैं।
Are there questions already in the chat box? Yeah, there are questions. Okay. Before we progress, I think कोई हाथ दिख रहा है? I already see a hand. Shyama Shivadas. Okay, let's begin with that. आप उनको unmute कर दीजिए. Yes. Am I Yes. there now? Yes. Yes, and you're audible. Just say who. Go ahead. I wanted to इसलिए मेरा हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. आप इंग्लिश में बोलिए. Yes, that's better. So I was born here, but then I lived most of my life in the US. So I'm thinking on two things. When I grew up in Kerala, I had some experience with my aunt who developed the first schools on basic education throughout Kerala in the tribal areas. I mean, she was with Gandhi and then with Vinoba. So, so I coming from a city school, although by progressive communists as well as, freedom fighters, when you go to the village schools, the tribal schools in the reserve forest, you're so dumbed down. You don't have any reality of what's going on in the lives of these people, nor do the teachers that come from we only have an intuitive knowledge of it. That's why I was interested in Nai Talim, Gandhiji's Nai Talim, where he said the teachers should come from them, and also Paulo Freire, who said radical thinking is a good start, but that's not the end of it. You got to have what is called conscientization, where you really allow those people to form their own realities and identities. You know what I mean? So I think JNU to a certain extent at a very high level, like on higher studies, has taken it. But I travel a lot in Latin America, and I have met and talked to people who worked with Paulo Freire. So they do not. I think Yamini would be able to think more on this, because there are some valid criticism of Teach for America, where rich elite like Harvard graduates or whatever, with good intention, go and teach for 2 years in a black poor school. And what it at the end gives is, an inferiority complex that you're never going to apply, you're never going to come up there. Do you understand what I mean? So what would have happened for Teach for America? It was a second chance organization for a black man who's taken his GED, or an African-American female. This may be off the topic, so I just wanted to let you know that exists. When we talk of Gandhiji, it didn't happen in India yet. I haven't seen, except I can actually pinpoint 2 schools that has really adopted. All right, guys. Thank you. Thank you. We'll take more comments and questions. Yes. Who wants to speak? Is there any other hand up yet? Suhas Kolatkar, yes. Can you unmute him? Yes. Suhas, please go ahead. Yeah. I'm Suhas, an activist with National Alliance of People's Movements and associated with the Jeevan Shalas by Narmada Bachao Andolan in the tribal area, and also a member of founder group member of Akshanandan School in Pune. Meaning, as to what's going wrong, we have discussed a lot. I would like to ask Shantha ji, how should we go about to ensure that this so-called NEP 2020, which is imposed on us without following the proper discussion in the parliament also, it's illegally imposed during the pandemic. How can we make an attempt to that it should be withdrawn, because it does not consider anything about the children or the learning process, as we all know. It's only to encourage centralization, corporatization, communalism, and exclude the children from the education system, especially the marginalized and poor children. So it's everything against democracy in that NEP 2020, which is prepared by the corporates and not by educationalists.
They have ignored thousands of objections that we have raised before the pandemic. They have just ignored it. It's rubbish. It's not an education policy to my mind at all. So please guide us and let's make a collective attempt so that it would not be imposed at least on states, because education that way is a state subject, but it is being imposed on all states. Towards just one comment. Towards the merging of schools, which you said in UP, it's not just in UP, it is being imposed in all states, including Maharashtra, in spite of the objections we are taking. That's again a very sad thing. NEP 2020 does not respect the Right to Education Act also. So that could be one way of challenging it. So how can we go about it? That's my concern. Thank you. Shantha, would you like to intervene? Would you unmute yourself? Or can you hear me, Shantha? Can you unmute her, Leena or Bhavna? Yeah. Yeah, okay. Shantha? Yes. Would you like to respond, please? Yeah. I think this is an issue that each one of us is actually, what does one say, disturbed about. We know NIEPA has, as even Yamini has talked about, has centralized education, and privatization of education has happened. More importantly, homogenization of education. They have also introduced a lot of concepts, which are in terms of what nation is, what nationality is, what Hindutva is. All kinds of things are coming in an indirect fashion. So I think there is a need to constantly keep interrogating it and not give up, because we all know what is wrong with education system. I should think that we must constantly, in fact, emphasize the importance of Right to Education Act. There has never been any conversation about Right to Education Act. After it was passed, only some of us who were part of it talked about it, but they were never. Can you just hold the line? I mean, I'll just silence my. I think there has to be a huge discussion about what the strengths of Right to Education Act, its links to democracy, its links to children's rights, its links to the struggle that went behind even the enactment of Right to Education. That I think is very, very important. The propagating of Right to Education Act is really important. There is every clause there has to be a poster about. And as civil society, as NGOs, it doesn't require much funds, I suppose, to write small pamphlets and small posters and tell them this is what Right to Education Act is about. One need not even do critique of NEP, but one has to say this is your right, that a child has to go to school and he doesn't have to produce an Aadhaar card or whatever. This is his right, that there cannot be detention of children in schools. This is your right, that every school must have one teacher for so many children. It must have a library, it must have a boundary wall, it has to have an art teacher, a drawing teacher. I think I also, I would say that we have not also done enough, but there has to be a very huge public awareness on what the Right to Education Act is. We have not actually considered it important. And we must know that the Right to Education Act is also a product of struggle. It didn't come automatically. Right. There was so much of mobilization that happened in the country, putting pressure on the government that they should enact the Right to Education Act. So one must continue the struggle that it was actually implemented. Very, very important. Yeah, true. But I was just saying, can we even legally challenge it? Of course. The NEP.
Any, we'll do everything. We have been part of the right to I know. I think education that's a struggle. very good idea, I think. Yeah. Because in any case, as you said, it has got legal validity in any case. So I think what you said. If people like you take some initiative, we all thank you for the suggestion. I will have to talk to some of the advocates. Please, if they can take it up. I think it's a very good idea. Yeah, I know Deepa also, and I have met you in one of the public hearings in. Right. I know, I remember you. Yeah. I remember you. But Thank I think you, this is an excellent idea. I will talk to some who are good in the legal fraternity. If they can, in fact, see the sections in NEP which violates the Right to Education Act. Yeah. In fact, NAPM also has a subgroup called Najar, who is all these legal and socially oriented people. I think if you can, I mean, you know my number, so if we can get back to it, it's an excellent idea to take in fact talk about how NEP is against rights of children. You know, that's a very good idea. I will keep in touch with you. Thank you. Let us take it ahead. Thank you so much. मैं नंदलाल बिहार से पश्चिम चंपारण से बोल रहा हूँ। जो हमने जो सुना जो विचार, क्योंकि हम लोग एजुकेशन पर जब बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस समय काम किए थे और कहा गया है कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाएं। ये तो प्रॉब्लम रहेगा ही, लेकिन आज भी जरूरत है। एक प्रयोग किया गया बिहार में और राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम के द्वारा कि एजुकेशन को कैसे सबके लिए सार्वजनिक बनाया जाए, ये प्रयास शुरू किया गया। और जरूरत आज भी है कि जो मुख्य जो फाउंडेशन है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और प्लस कम्युनिटी है, उनके बीच में जरूरत है काम करने की और कंटिन्यू करते रहने की। क्योंकि कभी कभी जैसे अभी जो बीच में मैडम बोल रही थी कि मनीषा जी और शांता जी के MM झा जी जो थे बहुत प्रोडक्टिव थे। कभी कभी चूंकि यहाँ तीनों का गठजोड़ होना जरूरी है, सरकारी प्लस कम्युनिटी प्लस वॉलेंटियर्स प्लस टीचर प्लस बच्चे, सबको पार्टिसिपेशन की जरूरत है। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम लोग चूंकि फील्ड में एजुकेशन पर ही काम करते रहे। BEP की जब शुरुआत हुई 1990 में, जब MM झा उसके डायरेक्टर हुए तो हम लोगों ने काम किया। आज भी समस्या है जो हमारे मैडम बोली हैं आपको, मनीषा जी की, ये जो है आज भी बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे आधार कार्ड चाहिए जी, बैंक अकाउंट्स होना चाहिए जी, ये सर्टिफिकेट, लेकिन अच्छे शिक्षक भी है। जरूरत है उसको कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ाने के लिए और कंटिन्यू प्रयास की जरूरत है। कम्युनिटी में भी आज भी अवेयरनेस बिल्डिंग की जरूरत है। तो चूंकि एक प्रयोग हुआ था कि प्लस NGO, GO प्लस गवर्नमेंट ऑफिसर्स और वॉलेंटियर्स अगर मिलकर आज भी कमियों को हम देखे तो रहेगा ही, लेकिन प्रयास पॉजिटिवली करने की जरूरत है। उसके लिए जो को बोलते हैं पॉलिटिकल विल पावर, क्योंकि आजकल सारा चीज का कंट्रोल पॉलिटिकल सिचुएशन से हो रहा है। तो इसीलिए हर किसी की पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तब हम लोग इसको एक अच्छा कर सकते हैं और प्रयास करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम आते रहेंगे, ये मेरा अपना ये है। और हम लोगों ने अभी प्रयोग किया, ऐसे बच्चों को एडमिशन कराया। अभी एक सप्ताह पहले जो बच्चे सुअर चला रहे थे हमारे चंपारण में, लड़कियां थी, उनका हम लोगों ने चर्चा किया, बात किया, उनके पेरेंट्स से मिले, टीचर्स से मिले, उनका एडमिशन भी हुआ। बच्चे लोग कंटिन्यू उनका फॉलोअप भी कर रहे हैं। ये तो प्रयास होना चाहिए। और ये आपने जो आज जो एजुकेशन के ऊपर जो राइट्स के साथ साथ राइट्स लेना पड़ता है, उसमें हर आज जो बीमारू स्टेट है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
चाहे वो हमारे लीडर्स हो, पब्लिक हो, उस लीडर्स को हम ही आप चुनते हैं, उसको चुनने का काम हमारा ही है, हम ही उसको चुनकर भेजा है। इसीलिए हर लेवल पर काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। बस इसी बात के साथ मैं थैंक आपको यू, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। ये There are two hands, three hands rather. One is Jha Saketan, Madhur Kumar and Kritika. So let's take their hands first. yes, sure. झा Unmute. जी, झा सकेतन, आपने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन मैम। Good मैम, evening. actually I want to address one major issues in regarding Odisha's tribal educations. Yes. Okay, currently I am pursuing my PhD in Tata Institute of Social Sciences, and I am working with inequalities in education, mostly in higher education right now, with the respect to tribe only. But during my fieldwork, I found that in all the majorly states of Odisha, in the south, in the tribal regions, most of the schools are first they gone with merger, then abolished. And the problem regarding is this: one of the institution called Kalinga Institute of Social Sciences, he is taking the responsibility of all of the child in the name of the education. But the problem is, whenever they are admitted there, because he is evacuating every children from each part of the country in tribal children, and most of the children now got education from there from Odisha only. And the major problem I am addressing here is that the education system, the mainstream education, never going to support them for their to retain their tribeness, identity, language, and everything. And that school is also doing the same thing. Okay. Mridula, can we take other what kind of question and solution? then Please. yeah, can you I'll unmute him. मधुर कुमार जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, सभी को नमस्कार जी। मैं पटना बिहार से हूँ और बहुत अच्छा मैंने आज का सेशन मुझे लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अभी हम बात जो करना चाह रहे हैं कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है, हम तो दो तरह के बात करेंगे। बहुत सारे बात जो है आई है, तो इसमें जो व्यवस्था है गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात करें और गरीब के बच्चों को जब एजुकेशन की अगर बात करें, तो एक तरफ प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनका जो व्यवस्था है, उनका जो प्लेग्राउंड है, सारा उनके जो सिस्टम है, उनका कंप्यूटर सिस्टम, ये सारा चीज है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल का अगर बात करें तो उनको जो है एक बच्चों का एक माहौल नहीं मिल पाता है। जो विद्यालय है जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो एक तनाव टाइप का लगता है कि बिहार में उस तरह का परिस्थिति बना दी गई है कि बच्चों को जो है स्कूल के नाम पर जो है ना उनको तो बस सिर्फ जोड़ना है। जबकि ये है कि वहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलने के कारण है कि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। वो जो है बच्चे जो जाते हैं वो कहेंगे डिप्रेशन में होते हैं, उस तरह का माहौल नहीं होता है, खेल का माहौल नहीं होता है, उनका कोई जो है एक्टिविटी नहीं हो पाता। इसके वजह से बिहार में जो बच्चों का स्थिति है बहुत ये खराब हो जाता है। दूसरी चीज है कि वो अगर बिहार के बच्चे अगर प्राइवेट ट्यूशन अगर नहीं करे तो मैट्रिक पास नहीं कर सकता है। उनको 5 क्लास 6 क्लास में चल जाएंगे तो उनका अगर कहीं एक अच्छा, यामिनी मैम जो है एग्जाम्पल दे रहे थे कि ग्रास रूट में जाकर करके बच्चा तो पढ़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन वो कैसे पढ़ पाएंगे? उस तरह का माहौल ही नहीं बन पाता है। विद्यालय में जाएंगे तो आज भी बहुत सारे विद्यालयों को मुझे सर्वे करने का मौका मिला, वहां तो विद्यालय में सभी जगह टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं होता है। खास करके लड़कियों को दिक्कत होता है कि वो टॉयलेट के लिए घर जाना वहाँ, तो उस तरह का जो इस तरह का जो व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार अभी
जो कह रही है कि बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्टेट में जो है अभी जो मर्ज करने का जो अभी सिस्टम कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसके वजह से हम मर्ज कर रहे थे, तो समाधान है नहीं। सरकार अपने जो है दामन में झांक नहीं रही है कि बच्चा आखिर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो उस तरह का माहौल और उस तरह का एजुकेशन नहीं दे पा रही है सरकार। इसलिए जो है जो थोड़ा सा भी सक्षम जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था खास करके बहुत दयनीय है। घोषणा तो बहुत हो Now we have Kritika. Kritika, please unmute yourself और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. Yeah, good evening, ma'am. So I'm not having any question right now, but I would like to introduce me first. Like, I am from Bareilly, and I'm doing my post graduation from like Kurukshetra University, and so I would like to mention a point which is like really it's very stressful and frustrating regarding the school education which we are getting, like which has been मतलब आज जिस तरीके से स्कूल एजुकेशन हमारी रन कर रही है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एज, क्योंकि एक चीज हमारी आती है लाइक इट्स समथिंग लाइक इट हैज बिकम अ कास्ट बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पर लाइक कास्ट को लेके काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेस को लेके होता है. सो आई थिंक दिस, ये जो एक कास्ट का इन्वॉल्वमेंट है स्कूल में, और जो एक होमोजेनिटी है, लाइक देयर इज अ होमोजेनिटी इन स्कूल, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द स्कूल वेयर इट्स अ प्राइवेट स्कूल एंड वहाँ पे फीस जो है 17 लाख से, मतलब इट्स हाईली पेड फी. तो हम एक होमोजेनिटी देखते हैं, लाइक मतलब, लेकिन हम जब एक स्कूल की बात करते हैं, इट्स अ स्कूल विच इज अ फ्री प्लेस टू प्रोवाइड एजुकेशन, जो कि एक यूनिवर्सल है. मतलब उसमें कोई लाइक कुछ उसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बट जो आज हम एक एजुकेशन देख रहे हैं, इट हैज बीन लाइक कन्वर्टिंग इनटू अ वेरी बिजनेस पर्सपेक्टिव एजुकेशन. और कैसे जो है बेसिकली हम देखें तो आज मतलब पहले कभी पहले जो था, कभी स्कूल वाज नॉट प्राइवेटाइज, like Kritika, can we be privatization. specific? We are getting late because this Zoom meeting is going to close. Okay, Can you okay. have, if you have specific question to ask, you can ask. And otherwise, if you want to share something, put it in the chat box. Yeah. So the next person I would like to call Robin Ji. Robin, please unmute yourself and ask your question. Robin, आप please unmute कर लीजिए. नहीं, he's gone. So it's fine. Do we have any other question or anything? Bhavna, I don't see any question or I think Robin का वो unmute नहीं हो रहा है, I think. अच्छा. हाँ. And there is another, अभी एक हाथ और आया है, Barira. Barira, can you unmute yourself and ask the question? हो गया मैडम, कैन आई आस्क? Yes, please go ahead. Yeah. थैंक यू वेरी मच. मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फोरम मिला है, यहाँ पे इतनी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द होस्ट फॉर बीइंग गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग. और मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं. तो अभी टाइम कम है, लेकिन मैं छोटी सी बात बताता हूँ. यहाँ पे कंप्यूटर टीचर अपॉइंट किए गए हैं. तो आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन वन ऑफ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन इन पंजाब, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1903. तो उसके बाद ये इनका चर्च के पास चला गया, उसके बाद वो चला रहे हैं. तो वो आईसीटी के द्वारा कंप्यूटर टीचर अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट स्कूल्स में. वो 90% कंप्यूटर टीचर्स अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद अपने पास बुला लिए हैं वोटिंग का काम करने के लिए, इलेक्शन का काम करने के लिए.
तो पिछले काफी सालों से बहुत सारे स्कूल्स में वो कंप्यूटर टीचर्स कभी पढ़ाने गए नहीं है। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारे शिक्षा के जो तंत्र है जिसको या व्यवस्था है उसमें। तो ये छोटा सा मेरी कंट्रीब्यूशन है इसमें, इस डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। Thank you. I think we have now the last person, Barira. Barira, can you unmute? Yeah. Thank you so much, मैम, कि मुझे इतने अच्छा मौका मिला और मैंने कभी देखा भी नहीं था कि इस तरह का डिस्कशन होता है कहीं पे भी। तो मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे भी ना एजुकेशन सिस्टम मतलब गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल होता ही नहीं है। एक तो निकलती ही नहीं है गर्ल्स स्कूल के लिए, और देन दूसरा ये होता है कि अगर बॉयज भी जाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब 0% में 1% भी नहीं होती है वहां पर। तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे भी थोड़ा ग्रोथ हो और अच्छा एजुकेशन सिस्टम बने। वहां पे बिल्कुल भी मतलब होता ही नहीं है। Thank you so much, Barira. Now I think मृदुला जी आप इसको देखिए। हाँ, मैं शांता जी और मनीषा भी है यहाँ। आप दोनों अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए जो कलेक्टिवली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शांता मैम पहले बोलना। हाँ ठीक है, शांता प्लीज। I will be in the sorry, I will be in English, so I'll be short. Yes, it's okay. And, it's okay. No, I think what comes across very clearly is how do we make voices of people, voices of government and the state and establishment. That there is this anxiety, there is a consensus that the government is not working at all on education, and in this there is a consensus that everything good idea also is distorted to become pro establishment and not pro people. So that I think how do you restore faith in the system is the issue, and through this how do you change the system. I must give you an example that when we were working with the government, our project proposal, when we made to the government, we said we are working towards mobilizing communities about their rights and empowering people to question the education system to see that they deliver right to education. Can I use that vocabulary today? Because there was a democracy, because there was a democratic environment, we were able to mobilize communities, we were able to put pressure, we were able to change the policies. In fact, we were also able to get a change in the right to education. I mean, in the Education Act. So I think now we are in a huge, huge system of challenge. There is no way in which I can make a proposal to the government of India that I want to mobilize communities to see that they assert their rights and they claim their entitlements for the system. That I think is a challenge, but we cannot give up. There are many, many organizations in the country who are working on children's right to education. I hope that we are all able to come together, all like-minded groups come together, and we fight our own millions of battles in our area, but at the same time, we are able to do a coordinated effort to see that the right to education is actually implemented. We are, of course, discussing extending right from 3 years to 18 years. That also should be done because nothing can be attained with fragmented approach. When we do that, I think we will have to keep on pushing the government, and without any fear. It's only our pressure that can bring about change, and I think we should continue to exercise pressure to bring about change. It's a very sad situation that we are in. Absolutely sad. I mean, the last thing that somebody asked, in effect, they have interfered with everything. And I think the last thing about contesting legally what NEP has done,
should be one of, it was a very good idea. They talked about Swachh Bharat, they talked about Seva, they talked about Ahimsa, they talked about inspiration from ancient knowledge, departure from secular and scientific temper. So we will have, there are so many things in that NEP one can pick up sentence by sentence to contest legally. So to me, that was a very big takeaway from this discussion that we've had. Thank you. Manisha? Ma'am, Of course, Shantha ji has said. मैं हिंदी में एक बार बोलना चाहूंगी कि भारत में मैं समझती हूँ कि दिक्कत हमारी ये है कि हमने स्कूली शिक्षा को और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को समझा ही दो सेक्टर, और हमें ये समझना है कि स्कूली शिक्षा में टीचर्स क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। ये कोई कृत्रिम टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई बीएड वाले पढ़ा देंगे, कट एंड पेस्ट मेथड, टीचर कैंची से कागज काटेगा। अब दुनिया के 6 जगहों में आप जाएंगे तो अच्छे विश्वविद्यालयों में अब कनेक्शन बिल्कुल खराब है मनीषा का। भारत जैसा आप देखते हैं वैसे हो रही है। लेकिन ब्राजील में अगर हम देखें तो ब्राजील में वहाँ के प्रोफेसर ने जितना जायर बोल्सोनारो से कानून के जरिए लड़ाई की, उनके यहाँ यूनिवर्सिटी के एकेडमिक फ्रीडम और ऑटोनॉमी का राइट भी उनके संविधान में दर्ज है, शिक्षा का अधिकार भी है और ये भी दर्ज है। तो उन्होंने एकेडमिक फ्रीडम और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटी के जो बजट्स काटे गए, यूनिवर्सिटी पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठाए गए, यूनिवर्सिटी में जब रेड्स की गई, सबको ब्राजील में चैलेंज किया गया। लेकिन ये भी चैलेंज किया कि स्कूल के टेक्स्ट बुक्स के साथ छेड़छाड़ हुई। हमारे यहाँ भी पहले भी हुआ है ये कि हम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन मुझे दिखता है कि लड़ाई जो है वो लंबी है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखिए, कभी कभी साइंस पढ़ता है देश जब कहता है कि महान देश बनाना है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाना है और हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, लेकिन इतिहास तब पढ़ता है और इतिहास को पढ़ने की जरूरत तब पड़ती है जब हमको ये समझना है कि भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय जो है कब बनाए गए हैं, जब सेडिशन लॉज के खिलाफ बड़ौदा में लड़ाई हुई तो वो विश्वविद्यालय बनता है। मैसूर ने कहा हम लड़ नहीं सकते, लेकिन वो वही वक्त था और लगभग वही समय था जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और गांव में जाके विश्वविद्यालय बना दिया। तो मैं बार बार ये सोचती हूँ कि आज भी यक्ष प्रश्न हमारे सामने यही है कि कैसे अपने गहरे सोच से हम अपने विश्वविद्यालयों को फिर से बनाएं। हमारे विश्वविद्यालय जो हैं वो अमेरिका की देन नहीं है, अंग्रेजवा सरकार की देन नहीं है, इस तरह के चर्चा और विमर्श की देन है, लेकिन सबसे ज्यादा निलहा किसान को आज़ादी कैसे मिले और हमारे पूर्ण स्वराज की सोच की देन है। तो हम वैसा विश्वविद्यालय बनाएं जो हमारे पूर्ण स्वराज का विश्वविद्यालय हो, हम वैसा विश्वविद्यालय बनाएं जो गरीब और किसान के बच्चों की पढ़ाई पर उतना ही महत्व दे जितना कि महत्व वह उन वैज्ञानिक आविष्कारों पर दे जिससे कि मानव जीवन जीने योग्य भी होता है। आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सन 70 के जिस सेमिनार का बात मैं कर रही थी उसमें एक फुटनोट में मुझे दिखा कि तब भी अमर्त्य सेन जो है उस सेमिनार में भी शिमला में बैठकर बातें कर रहे थे कि अब तक हमने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है इससे इनइक्वालिटी मतलब ऊंच नीच में फासला जो बढ़ ही रहा है, तो उस फासले को हम कैसे कम करें हमें सोचना है। और जितने जमीन की बातें हम सुनेंगे, जैसे कि अंत में कुछ साथी बता गए, सबसे अंत में जो प्यारी बच्ची बोल रही थी, मैं नाम नहीं जान पाई उनका, वो कह रही थी अभी भी बिहार में लड़कियों के पढ़ने की कोई खास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो है हमेशा फील्ड में जाके ये समझना कि क्या हमने जो 2005 से 2010-15 के दशक तक बिहार में देखा, क्या वो स्कूली शिक्षा की पूरी क्रांति है? अगर बैक हो गई है तो हमें फिर से उठना है और फिर से स्कूलों की वही लड़ाई लड़ी जानी है। थैंक यू। Thank you to Mridula ma'am also for the invitation and to all my co-panelists, Shantha ma'am especially. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the lovely evening. I enjoyed every moment. You know, Yes, ma'am. Thank you. it's a solidarity meeting, I felt. Yes. Yes, Thank you ma'am. everyone Yes. for being there, and we hope Thank this web series is going to go on, Yeah. and we will have many more topics to discuss. And Anhad is always kind of a torchbearer to take up issues which are a little difficult and people who don't talk about, like first Shantha ma'am ने भी बोला कि ये टॉपिक बड़ा बोरिंग ही होगा, पर नहीं, इतना ये बोरिंग नहीं है, ये एजुकेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसको पूरा नरेटिव में वापस लेके आना, और उसके बारे में बजट और उसके बारे में और बाकी चीजों के बारे में हमें जो बात करनी बहुत जरूरी है। यहाँ बहुत तगड़ा अटैक हो रहा है, और मैं आपको थोड़े आंकड़े बता सकती हूँ, जिसमें अबाउट इन मध्य प्रदेश में ही कोई 24% स्कूल्स का रिडक्शन हुआ है। 24% ऑफ द स्कूल्स हैव बीन रिड्यूस्ड। डेटा बता रहे हैं पिछले 10 साल में। उसी ढंग से बहुत सारे और प्रांतों में डेटा बहुत कम है। तो क्या हम ऐसे डेटा निकाल सकते हैं जिसके ऊपर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस स्टेटमेंट इशू करें और ये बताएं लोगों को कि हम इधर आंखें बंद करके बैठे नहीं हुए हैं, हमें सरकार की सारी मूवमेंट हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। वी आर रेडी टू टेक द चैलेंज, एंड वी आर रेडी टू टेक एजुकेशन एज आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, और हमारे को इसको लेकर आगे बढ़ना है। थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग अप सो लेट. It's almost 4 hours now. Thank you so much, everyone. अच्छा लीना, thank you so much. I just wanted to say that ये जो issue है of reduction of the absolute numbers of schools, I think it's a very good entry point for this debate, because it is something which appeals to people and people understand immediately कि क्या हो रहा है। बाकी चीजें थोड़ी subtle हो जाती है, ये तो raw एक तरह का solid ये data है, इसको जरूर आगे लेके। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी आखिर में कि we have to find ways of putting pressure on political parties to take up this issue. Yeah. In fact, there is a myopia even among the very progressive political parties about the whole issue of education, including parties like CPM, who are doing very well in Kerala when it comes to education, but taking it up at a national level as an issue of the whole democratization crisis. You know, I think that understand what actually, we didn't even talk about university education today. We mostly talked about school education. What is happening in the university system is equally dangerous and bad. In fact, वहाँ पे तो जो बनी बनाई चीज है उसको तोड़ा जा रहा है. There's a destruction happening, you know, which is something we need to, maybe we should have another discussion sometime on the university system. क्या हो रहा है, जिसके हम बहुत सारे हम लोग हैं यहाँ जिनको फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है उसके बारे में कि क्या एग्जैक्टली वहां पे हो रहा है. आप जो कह रहे हैं कि स्कूल टीचर आजकल सिर्फ फॉर्म भरते हैं, what Shantha said, this is the same complaint we are getting from college teachers. All our time is going in filling forms. This, that, all irrelevant courses have been introduced. You know, the academic content of the entire BA program is being whittled down. But who is talking about it? Amongst us, we talk about it. We are very agitated about it. Our students are agitated, those who are teaching. But the world around doesn't know. When you talk to people, they say, really? Is it really so bad? Is there so much political interference happening? People don't know, because it doesn't come out in the press. It doesn't come out in any public forum. So I think we have to raise awareness of this in society as well as among, I think, political parties. We have to maybe get together and go and meet people and tell them, in whether it is in, Telangana or in Delhi or wherever, the importance of this aspect in people's lives and how it is politically important for them to take up this issue. It's not just a question of for the people's welfare. For them, politically, it is very important to take up this issue. It's a deep political issue. Education is a political issue.
It's not a non-political issue. You know, you can't become more political than that, where you're going to the heart of the problem, you know, in every way. It's the future of this country is at stake. So I think it's very good that everybody responded so well. Thank you, all the panelists. Thank you, all the participants, for bringing your concerns, bringing your information to the fore, and let's keep it up. Yeah. So we can actually take it from here in terms of that. If I was thinking, because there's so much things which had come up, can we have a small press note which can be circulated as a just gist of what happened in this particular meeting? And after that, if you allow us, then we can make a small committee. I mean, a small committee within the NGOs who are working around education, so that jointly we take this proposal and ask the government to answer our question. If they don't answer, then we can resort to other means of saying that we are closing the schools, then what is the basis and all that stuff. And also see how the students are shifting from government school to this thing. All the data are all available. Only thing is, some research institute has to come together to sort of bring it down and bring it in as a chapter. So if that can be done in within 2-3 months, if he'll be able to sort of pitch in this thing, then this webinar would be a very great success. A very good idea. May I just come? The data is 80,000 schools were merged in the past 5 years, you know, and 8,000 schools have zero enrollment, and 1 lakh single teacher schools, all affecting over some 60 lakh children. This is the All India data. Yeah, US DICE. Okay. It's all in the newspaper. It's there in the newspaper. Right, So, right. but it's a huge. And obviously this affects the marginals. Absolutely. The smaller people in the smaller hamlets, the tribal areas, the hilly areas. Right. In a place like Himachal Pradesh or hilly state, where a small school is necessary in order for the child to go to school. Absolutely. The child is not going to go to school for 5 kilometers away. How they brought education to Himachal Pradesh by small schools everywhere. Correct. 90+% education of girls. Now all that will get reversed. Yes. And also, I must indicate this thing, in UP and Bihar, maximum dropout would be girls, because then the girls will not be allowed to travel 5 kilometers to go to a merged school, where they are very unsafe to, and also there is no mode of transport. Actually, that is the issue. It is the transport, because they send girls traffic to Delhi, and they don't think that is unsafe. It's not that. It is, there are no free transportation. मुझे लगता है लीना, अगर हमने सवाल देखे हो तो जो गुजरात, मैं बता दूं कि यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ था जो गुजरात के एक गांव से था, और उस गांव में वो 20-25 लोग स्कूल में लैपटॉप लेके साथ में बैठ के सुन रहे थे। फिर अब शायद लेट बहुत हो गया तो उन्होंने आफ्टर मीटिंग वो चले गए, बट उन्होंने बहुत सारे सवाल इसमें लिखे हैं जो आप बात कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर हिमाचल में जाना और सारी चीजें। इट इज सिमिलर हैपनिंग हियर। वो स्कूल्स बंद हो रहे हैं या 4th-5वीं तक है, उसकी वजह से लड़कियां जो है, उन्होंने लिखा है उसमें, मतलब वो अगर हम चैट बॉक्स देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ रहा था, कि वो यही हो रहा है कि बच्चियां पढ़ने नहीं जा पा रही है। उसको प्लीज उसका ले लेना आप कॉपी। जी 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 बिल्कुल है ना। या श्योर, थैंक यू। मेरे को लगता है कि एक बार फिर उनके साथ अगर कोई एक व्हाट्सएप वाली मीटिंग हो जाए हमारी बीच में, अनहद और उनके बीच में, तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर कोई काम हो सकता है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। वी कैन डू। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। Shantha ji, we will be together in this fight. Oh, thank you so much. Now let's work together. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. So thanks, Mridula. Thank you. Bye bye. Bye. Good night, everybody.